I would request you to review the seating arrangement in the Rajya Sabha to accommodate more members in the House so that there is an atmosphere of debate. We'll discuss it because to my knowledge, original idea for Central Hall is 244. But after I reviewed, I sent a word to the Speaker saying that then you will not be following social distance. So that has been reduced to 100 and odd. I don't exactly remember, but you meet me, we'll discuss. No problem. The discussion, Professor Manoj Kumar Jha. मनोज जी, हाँ प्लीज बैठ के भी बोल सकते, खड़े होकर भी बोल सकते। जैसा सर खड़ा होना चाहूंगा पीठ के सामने। खड़े हो जाइए। शुक्रिया सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, दिक्कत यह है कि उनसे जिनसे होती है इंसान को हमेशा तकलीफ, वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, एक पंचतंत्र में एक कहानी है। एक चित्ररथ नाम के राजा हुआ करते थे। उनके पास एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में सर छोटे छोटे खूबसूरत हंस बहुत सारे थे। वो 6 महीने पे एक पंख गिराते थे और राजा को पंख दे देते थे। बीच में एक सोने का, तथाकथित सोने का के पंख वाला एक बहुत बड़ा पक्षी आया। उसने कहा मैं इस सरोवर में रहूंगा। छोटे पक्षियों ने कहा कि महाराज जी, तो हम सरकार को, राजा को देते हैं अपना पंख 6 महीने पे, आपके लिए यहां गुंजाइश नहीं है। वो सोने के तथाकथित पंख वाला पक्षी वो पहुंच गया राजा के पास। उसके सिपाह सलारों को कहा कि देखो ये तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं और कब्जा करके बैठे हुए हैं सरोवर पे। राजा ने अपने सिपाही भिजवा दिए, सारे हंस मार दिए सर। और वो जो सोने के तथाकथित पक्षी, बड़ा विशाल पक्षी था सर, वो भी उड़ गया। मैं इसका संदर्भ छोड़ता हूं अपनी सरकार पर, सत्ता प्रतिष्ठान पर। अभी जमेगा, इंतजार करिए, अभी जमेगा। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि दूध में जोड़न ढंग से पड़े तो दही बढ़िया जमता। अभी जोड़न डाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस कथन को चंद खंडों में रखूंगा। पहला खंड होगा कि महामहिम के अभिभाषण का संदर्भ, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। दूसरा, लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका होती है। तीसरा, पीसफुल असेंबली के साथ कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क कैसे डील करे। चौथा, आंदोलनों के और लॉ मेकिंग के बीच का क्या ताल्लुक है। और पांचवा, कि रिप्रेशन की कहां तक इंतहा होती है। सर, लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बारे में हम सब जानते हैं। चौथे स्तंभ के बारे में तो मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर वैसे आपके दोस्त हों जिस चौथे स्तंभ पर कि एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो दोस्त ही आपका काम तमाम कर देंगे। वो क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हो, लोग संकट में हो, लोगों की मौत हो रही हो, और शाम में चलाएंगे खालिस्तानी एंगल ऑफ किसान आंदोलन। सर, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है। हम सब सर, आप तो सक्रिय राजनीति में थे सर। सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, हमने हजारों लाखों जाने गंवाई। कुछ तो सीखे इतिहास से। इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाह रहे। शाम ढले, खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दंभ से देखे, गुरूर से देखे। दंभ और गुरूर लोकतंत्र की जुबान नहीं है। सर, आप लोग कहते हो, आप बहुत लोग नहीं, कुछ आपके मंत्रीगण हैं,
माननीय सभापति महोदय, वो 303 कहते हैं कि 303 का आंकड़ा है। सभापति महोदय, इस सदन ने, इतिहास ने इससे बड़े आंकड़े देखे हैं। कहां भिला गए, कहां गुम हो गए, किसी को पता नहीं। आंकड़े नहीं इतिहास तय करते हैं, आंकड़ों के पीछे की संजीदगी और संवेदना इतिहास तय करती है। आपका हाई पॉइंट क्या है, आपका लो पॉइंट क्या है, आप फेल हो रहे हैं उसमें। और लाइटर मैन में कहूं, 303 नाम का एक राइफल हुआ करता था सर, उसकी सर्विस समाप्त हो गई है। 303 उसकी सर्विस समाप्त हो गई है। सर, मैं एक चीज और कह करके फिर मूल बिंदु पे आऊंगा। मैकबेथ से बहुत चीज हम सीखते हैं। शेक्सपियर ने ना जाने अद्भुत चीज लिख दी है। टेम्परेंस बहुत जरूरी है सत्ता प्रतिष्ठान में। कद तब बढ़ता है जब पद की गरिमा को आप समझते हैं। बाउंडलेस intemperance in nature is tyranny. It has been the untimely emptying of happy throne and fall of many kings. Intemperance अगर आपके स्वभाव में आ जाए तो सर, इसने कितने सिंहासन खाली करवा दिए, कितने राजाओं की घर वापसी करवा दी। थोड़ा सनद रहे, थोड़ा ध्यान रहे। Please. That is not acceptable. माननीय सभापति महोदय, एक हल्के स्वर में एक बात कहना चाहता हूं। सेंट्रल हॉल का जिक्र जयराम रमेश जी कर रहे थे। वहां जब बैठता हूं ना, तो दल से ऊपर लोग सोचते हैं। कई हमारे भाजपा के मित्रों ने पूछा कि क्या इस आंदोलन का स्वरूप क्या है, कैसे खत्म होगा। दिक्कत है कि सेंट्रल हॉल में तो आप पूछ लेते हैं, सदन में आप जुबान नहीं खोलना चाहते हैं। मैंने पिछली बार जब यह बिल आया था, कहा था कि दलों के दायरे और उस विप से ऊपर निकल करके देखिए। किसान देख रहा, क्योंकि उसने विप जारी कर दिया है, और उसके विप को अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं। लोकतंत्र में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र की अद्भुत कला होनी चाहिए। आप सुनाने में यकीन करने लगे हैं, सुनना आप भूल गए हैं। खास करके इस टर्म में तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। एनीवे सर, माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। हम सब जानते हैं कि सरकार स्क्रिप्ट तैयार करती है। बीते 29 जनवरी को जब महामहिम का अभिभाषण हुआ था, हम में से 19 दलों ने उसमें शिरकत नहीं की थी। माफी के साथ कहता हूं, कष्ट भी हुआ था, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ओकेजन होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जब समकालीन यथार्थ से, दुख और दर्द से, रंजो गम से मीलों दूर खड़ा हो, तो कैसे शामिल हो जाए। माननीय सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल होती है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, और ये तो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं छोटे छोटे हलकों में। अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और पूरे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर के मानव श्रृंखला बनाई, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्निंग हो रही है। और इस चर्निंग के पीछे का साक्ष्य क्या है? प्लीज, मैं एक आग्रह करूंगा सभापति महोदय, मैंने आज तक अपने सदन में कभी भी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं की है, तो सदन की बहस में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बस इतना आग्रह है। सर, हमने तो वो इतिहास भी देखा है कि एक पार्टी जो 2 सीट पर सिमट गई थी, वो कहां पहुंच गई आज। इसलिए ये इस चक्कर में ना पड़ा जाए। एनीवे सर, महामहिम के अभिभाषण को पढ़ने के बाद पहला ख्याल आया कि कहीं पर कहूं या अनकहीं पर बोलूं। जो कही गई बात, अब उसके बारे में मैं थोड़ा पहली चीजें कहता हूं। माय गवर्नमेंट होल्ड्स इन हाई स्टीम the values of democracy and sanctity of the constitution, संभवतः पेज 7 पैरा 25 होना चाहिए, मेरी मेमोरी अगर सर्व करती है सही। यस, पैरा 25। अब इसको सर व्यापक संदर्भ में देखना होगा कि माय गवर्नमेंट वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हाल के दिनों में जो भी देखे हैं वो संविधान से इतर देखा है। और वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी सर सिर्फ एक रेटोरिकल वैल्यू नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कोट करना चाहता था, लेकिन आगे रखा था, लेकिन अभी जहन में आ गया। रिसेंटली यू हैव सेड
Nationalism and patriotism is not simply sloganeering Bharat Mata ki Jai, Jai Hind, or Jan Gan Man. No, sir. The greatest act of patriotism is speak about the well-being of the nation. And that does not mean that I should stand in the orchestra party of the government forever and always. You have not done it when you were in a position. We shall not do it when we are in a position. We'll support you. समालोचना करेंगे, लेकिन आप ये नहीं उम्मीद करेंगे कि आपके खिलाफ का हर एक शब्द, हर एक लफ्ज देशद्रोही है। मैंने पहले सदन में कहा था, सर एक मशीन बनवाइए, कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, एक मशीन बनवाइए कि किसके अंदर देशभक्ति का पारा कितना है। सर हो सकता है आपको झटका लग जाए। देशभक्ति स्लीव पे नहीं चलती है, यहां रहती है, दिल में, उसका सीने से कम ताल्लुक। एनीवे सर, मैं आपको इसलिए कोट किया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज सर, अभी बंगाल में चुनाव है, तो पेज नंबर 26 पैरा 91 गुरुदेव के बड़े भाई का जिक्र हुआ, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। चौल रे चौल शोभे भारतो सौंतान, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद जोड़ दीजिए गुरुदेव की अपनी लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कहां है? दोनों को जोड़ के देखिए। ये चेरी पिकिंग नहीं चलती है डेमोक्रेसी में। आप चेरी पिकिंग के उस्ताद हो गए। चेरी पिकिंग मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, आंदोलन लोकतंत्र की जीवंतता का उदाहरण होता है। जिंदा लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र आंदोलन के साथ सदैव निरंतर संवाद की कोशिश करता है। सर, एक आशय मैं यहां रखना चाहता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस विभाग में मैं पढ़ाता हूं, एक विषय मेरा मूवमेंट भी है। सर बहुत सालों से पढ़ाया है आंदोलन। आंदोलन की सर 3 चीज होती है महत्वपूर्ण: एलिनेशन, अट्रैक्शन, कन्वर्जन। यानी कि अलगाव की चीज कहीं आई, उसके बाद आपका आकर्षण हुआ किसी विचारधारा से, उसके बाद आप सड़कों पे आए। सर हमने आंदोलनों को न जाने किस नजरिए से देखना शुरू किया है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े एंगल लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। इतना मजबूत लोकतंत्र है सर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर आपके दौर में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ होता। इस सदन में अभी कई लोग हैं जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, इंक्लूडिंग सभापति महोदय। जेपी की आंदोलन की कल्पना करिए, अगर जेपी को इन खाई, बाड़ों, कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर? कई मित्र हमारे बिहार से भी हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है? आप कहिएगा नहीं। सर मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं। आप कहते हैं 11 दौर की बातचीत हुई है। दिक्कत क्या है ना सर, किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान में एकालाप और वार्तालाप का फर्क समझना चाहिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग। आपके साथ दिक्कत है कि आप मोनोलॉग को डायलॉग का कपड़ा पहनाते हैं। ऊपर से मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुना जो वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। सर लोकतंत्र में खैरात की जुबान नहीं होती है। आप देने वाले कौन होते हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? अरे दे तो वो रहे हैं, 303 का आंकड़ा उन्होंने ही दिया आपको, और आगे के 3 और 0 कब उड़ा जाए ये भी वही तय कर देंगे। इसलिए ये जुबान बंद करिए, एकालाप और वार्तालाप के बीच की दूरी को खत्म करिए।
सर, मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है। देश सिर्फ सेना, पुलिस के जवान, जनगण मन, वंदे मातरम नहीं है। देश रिश्तों से बनता है सर, और आपने रिश्तों को रिसा दिया है, रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है, आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो। आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। सीए का आंदोलन हुआ, नागरिकों को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तो कमाल है, मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। इन इलाकों से जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है और एक बच्चा खेत में रहता है। आप इन बच्चों को वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, आपने उन्हें भिड़ा दिया। कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, अवतार सिंह पाश की एक कविता कहूंगा, यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए। कितना वक्त है सर? नहीं, आपका 18 मिनट अलाटेड टाइम है जी, आपने ऑलरेडी 17 मिनट्स दिया। ओ सर सॉरी, 2 मिनट दे दीजिए बस। 2 मिनट दीजिए। जी सर, आंख की पुतली में हाँ के सिवा कोई शब्द ना हो। आपको सिर्फ हाँ चाहिए आंख की पुतली में, चाहे वो कितनों भी अश्लील हो। पाश कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। और मन बदकार पलों के समक्ष हमेशा झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है, देश को अपनी सुरक्षा से खतरा नहीं है। ये फर्क आपको समझना होगा। माननीय सभापति महोदय, इस 2 मिनट का प्रयोग मैं, आपने किसान को लेकर के जितनी बातें कही उस पर, उन बिलों के बारे में पहले मैं बोल चुका हूं पिछले सत्र में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार में एमएसपी 2006 में खत्म की गई। बिहार के किसान की आय के बारे में आपको मैं आंकड़ा दूं उचित नहीं होगा, आपके पास आंकड़ों का भंडार है, आप तो आंकड़े तैयार कर लेते हैं, बल्कि कभी कभी पका भी लेते हैं प्रेशर कुकर में। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बिहार के मॉडल को, हम तो सोच रहे थे कि बिहार को, आप ही की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, बीती कई सरकारों ने बिहार को लेबर सप्लाई का स्टेट बना के रख दिया है। हमारा काम है मजदूर भेजना पूरे देश में, और हमने कोरोना के काल में वो सब देखा। हम तो सोच रहे थे कि हमारे बिहार का किसान, हालांकि किसान नहीं रहा, वो खेती हर मजदूर हो गया। हम सोच रहे थे कि उन्हें भी पंजाब हरियाणा की तरह। सर, आपने क्या किया? वो मॉडल आप चाह रहे हैं पंजाब हरियाणा में बिहार की तरह हालात हो जाए। कभी कभी मुझे इस बात का अंदेशा होता है कि संसद का भी वर्ग चरित्र बदल गया है। अभी संसद में किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग अगर होते, आप इतनी आसानी से बुलडोज नहीं कर पाते। मेरे स्वयं के नेता, कई मसले ऐसे आए, लालू प्रसाद जी, उन्होंने यह तय किया, और आपके भी लोग थे, आप उनको भूल चुके हैं, जिन लोगों ने खड़ा होकर के कहा कि यह हम नहीं होने देंगे। सर, अभी भी आपकी रीढ़ किसान और किसानी ही है। ये जो 303 का आंकड़ा आ रहा है ना सर, किसी के कोल्ड स्टोरेज से नहीं आ रहा है, किसी के गोडाउन से नहीं आ रहा है। 303 के आंकड़े को एक बार सर, और मैं इससे पहले कि जय हिंद कहूं, मैं माननीय सभापति महोदय अभी भी हाथ जोड़ के सरकार से आग्रह करूंगा। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आप दुविधा में होते हैं। प्लीज, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आप दर्द समझिए किसानों का। सर, पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर, इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना, जो अंदर तक आ गए। सर, लाल आंखें वहां होनी चाहिए, कहां हम आंखें लाल कर रहे हैं। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। अगर एक दिन इन्होंने हड़ताल कर दी, एक दिन तय कर लिया कुछ नहीं, सर, संसद बंद हो जाएगी, सरकारें बंद हो जाएंगी, क्या होगा पता नहीं। इससे पहले कि मैं कहूं जय जवान
जय किसान और जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, मैं बस सर 1 मिनट का और वह दीजिए, 30 सेकंड। मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज इतनी सारी चीजें थी। कई लोग इसमें हेरोल्ड लास्की को प्रयोग करते हैं, कहते हैं, कोट करते हैं। उन्होंने कहा था कि लिबर्टी के मसले पर you need to find the government accountable time and again. That's the test of the democracy. But we have failed. किसानों को ही हमने फेल नहीं किया है। और आखिरी सर, इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर। जय जवान जय किसान। Thank you, Manoj ji. Sri Swapan Das Gupta. Swapan, please. Sri Swapan Das Gupta. Thank you, Mr. Chairman, for giving me the opportunity to speak on the motion of thanks on the President's address. Sir, yesterday we heard a lot of invocation from history from the Honorable Leader of the Opposition. And today, Professor Manoj Kumar Jha warned us against the notion of cherry picking in history. Sir, at the risk of offending both of them, let me invoke something else from history, perhaps just a footnote. So when civil servants from the East India Company used to be sent to India from UK, or Britain as it was then called, they were given instructions, and one thing they were always told is that for everything that is true about India, the opposite is equally true. And I think it is necessary to point this out in the context of the outpouring of emotion which has happened on the farmers' agitation. So without going into the rights and wrongs of the whole movement, and without being judgmental, I just want to place a few facts. So the top 2 lakh farmers of Punjab and Haryana have incomes that are among the top 8% of all incomes in India, both urban and rural. Secondly, sir, about 20,000 of them have incomes in the top 2%. So this is not to berate these people. This is not to take what the leftists used to call a denunciation of the kulak classes. This is only to admire their hard work, their integrity, their persistence, and their adoption of technology which they have managed for so long. Unfortunately, sir, this is not a situation which prevails in the whole country. I think if I was to talk about my own state, West Bengal, you will find that for various reasons, also located in history, most of the people who are farmers, kisans, are marginal. They undertake subsistence farming. Most of them have land holdings which cannot earn them enough to survive. They need other occupations. On top of that, if we come to the minimum support price, we'll find that only 9% or more, between 9 and 10% of the farmers actually secure the minimum support price. And the price differential in rice between the MSP and what they get in the market can range from between 600 to 700 rupees per quintal. That's a colossal sum, sir. And if we were to take, what the NABARD has to say
West Bengal ranked 24 out of 29 in terms of monthly income for agricultural households. And the same study put the average monthly income for agricultural households at rupees 1,175, which is well below the national average. So the reason why I'm saying it is that such communities need value addition at every point. They need value addition in terms of marketing. They need value addition in terms of agro-industries. They need value addition to get organic farming off the ground. And they need a whole range of investments in the rural sector which has not been forthcoming. Even more than 30% of the vegetables perish as a result of lack of cold storages, and the lack of cold storages can be attributed to the Essential Commodities Act, which have put a certain barrier against hoarding and which was enacted at a time of food shortages. So these are the major constraints. And when you have a series of legislation which puts a seal of legitimacy, legal approval on contract farming, which has been done on an informal basis today, as Professor Ram Gopal Yadav pointed out, that legal sanctity which these acts give, I think are very, very important in terms of trying to actually lift a community, a whole region, which is now being deprived and which falls well short of the achievements which have been there in the Green Revolution area. I urge, therefore, everyone to not look at the whole country in terms of what the most successful have done, but also to look at places where there has been least success. So we have, in the course of the budget, spoken about the possibility, we have got hopes that in the coming year, India will reach double-digit growth figures again. That's a very good aspiration to have. But this double-digit aspiration, sir, cannot be achieved if a whole section of the country falls behind. Can you imagine, sir, the amount of achievement which we could have if the whole of Eastern India were to actually contribute their own 11-12% growth? How much it would grow? So this is not merely a problem of West Bengal. It's a problem which is there in Odisha. It is a problem which is there in Jharkhand, in Assam. The whole region, sir, has been suffering. We have yesterday, Mr. Prasanna Acharya spoke very eloquently on the need to have a special economic package for Odisha. Earlier we have heard such talk from people in Bihar as a result after the separation of Jharkhand. So it is sometimes difficult to have only special packages for one state at the cost of the other. I would urge, sir, to look at whether the government can look at the possibility of whether the whole of Eastern India can be regarded as a special assistance zone. And the reason for it is quite compelling. There are connectivities at every level. I wish to thank, for example, the Chief Minister of Orissa, who sent out his disaster management team during the Amphan crisis in West Bengal. He went out of his way to help in this way. In every respect, and at a time when people are talking about outsiders and homegrown people, etc., we must realize the deep degree of connectivity which exists between all of them. For instance, if we are to talk about coal, we can't talk about Raniganj without talking about Dhanbad. It's the same thing. We cannot talk about Darjeeling and Duars without talking about Assam tea. The problems are exactly the same. Steel, iron ore, where Durgapur is linked to Jamshedpur, which is linked to Rourkela.
It is all part of the same zone. In national security, the left-wing extremism which we are confronted in Odisha, in Jharkhand and parts of West Bengal, exactly the same problem. The problem of illegal immigration which is there in Assam is exactly the same as in West Bengal. And even if we are to look at it in pure spiritual terms, I, sir, cannot talk about my faith without talking about Jagannath Puri, without talking about Kamakhya, without talking about Baidyanath Dham. It is all part of the thing. Today, sir, we are in need of having an integrated approach to the whole eastern region. I was very glad when my friend Bhuvaneshwar Kalita spoke about the Prime Minister coming to Assam 40 times. He later corrected himself in the Central Hall and said it has been 41 times the Prime Minister has come. Now that's a colossal time. I dream of the day when in the whole of the eastern region we can welcome the Prime Minister 41 times. We can dream of a time when the Prime Minister's Kisan Nidhi Samman is available to the 70 lakh farmers of West Bengal which they have been deprived of. We can also look about the time, the short-sightedness of local politics which deprives people who are already deprived of the Ayushman Bharat scheme. Sir, India has an integrated approach. We have to take the strong and the weak together. And that is the philosophy of Sabka Saath, Sabka Vishwas. I want that philosophy, regardless of party affiliations, to be implemented in this country. If that approach is there, whosoever is in the state government does not matter. And I think if we can rise above this basic partisanship and welcome center in the states and the states with each other, I think we can be looking forward not merely to a 11% growth, but a growth which can be 15%, which can be the envy of the whole world. I thank you very much for giving me this opportunity to thank the President for his courtesy of this address. Thank you. Thank you, Sapanji. Sri Praful Patel, उन्होंने 5 तारीख को बोलने के लिए चिट्ठी भेजा. अच्छा. श्री कनक मेडला रविंद्र कुमार, प्लीज गैलरी 4. I am very grateful for giving this opportunity to speak on the motion of thanks and the presidential address. First of all, sir, the farmers bill and agitating farmers in Delhi, sir, on 20th 9 and 2020, the 3 bills related to farmers were taken up for consideration. Many of the speakers, including myself, highlighted the issues regarding the bill. Mainly, there were regarding doing away with MSP, contracting farming, and dispute resolution mechanism, etc. After the passage of bills, the farmers across the country started agitation in the national capital, and they have put forth their demands. The government should be magnanimous enough to consider their demands and come forward to accommodate their demands in the Act. But similarly, sir, in the state of Andhra Pradesh, the farmers are also agitating for the last 415 days with regard to the shifting of the capital in the state of Andhra Pradesh. The Honorable Prime Minister laid a foundation stone of the capital of Amaravati for the residual state of Andhra Pradesh. The construction of new capital is as per the provisions of Andhra Pradesh AP Reorganization Act 2014. The Honorable Prime Minister has allocated 1,500 crores amount for this project. The farmers voluntarily gave their land under land pooling scheme for the development of new capital city. Around 10,000 crores have already been spent in the construction of new capital city. But the present government
after assuming the office in year 2019, abruptly stopped all construction activities pertaining to Amravati project. The proposals to set up 3 capitals is opposed by the people of Andhra Pradesh. Abruptly stopping the construction activities in the capital of Amravati and proposal non-feasible 3 capitals formula in not only wasting the precious amount, public amounts allocated by the central government and also the amounts invested by the state government and also the farmers. The farmers have been agitating for the last 415 days, but the demand of the Amravati farmers did not consider either by the state government or the central government. It is high time to consider the demand of the agitation of the farmers and to look into to come for a better solution in this regard. Similarly, a Polavaram project is also a national project declared in the AP Reorganization Act. And it is almost during the earlier government, it's 69 to 71% had already been completed. The rest of the project has to be completed. For that purpose, under the guise of a reverse tendering, the present government abruptly stopped the construction of Polavaram project and wasted 1 year time, and also the crop, 1 year crop is being wasted for the local farmers. The project is now in doldrums, and under the guise of revolve, the project is delayed, and the date for completion of the project is keep on extending. Not only this rehabilitation and resettlement package is very minimal, and the state government is not taking proper steps to give serious through over the issue. As the incumbent chief minister is involved in so many CBI and ED cases which are being inquired and pending before the court of law. However, but it is for the high time for the central government to intervene and to allocate the funds to the Polavaram project, and to see that the project has to be completed within the specified time and to do justice to the farmers and the people of state of Andhra Pradesh. Likewise, Vijayawada and Visakhapatnam Metro Rail and projects also funds have not been allocated. And the presidential address importance have to be attached to the infrastructure and transport. I would like to draw the attention of the government towards the fate of the Vijayawada and Visakhapatnam Metro Rail service. And both the metro services are non-starter in the state of Andhra Pradesh. I seek a clarification in this regard. Sir, recently the state government passed an ordinance affecting major changes in the Municipal Corporation Act 1964. This has been done in the spirit of local self-government and the ulterior motive of securing more loans from the central government. I would like to, the very pathetic condition prevailing in the state of Andhra Pradesh, the central government is allocating amounts of funds under various schemes, but the government, the present government in the state of Andhra Pradesh is diverting the funds for the reasons, and this total mess in financial management in the state of Andhra Pradesh. The state is under severe financial stress. The situation has worsened to such extent that the state government of Andhra Pradesh find it very difficult even to pay the government employees, salaries to the government employees. There is no mention about this presidential address with regard to the state present government has borrowed about 1,46 crores during these 20 months. Likewise, there is a law and order problem in the state of Andhra Pradesh, where everybody the government filing cases against the persons who wish to criticize them and bringing it to the notice of the government. They are filing false cases and implicating theirs. And another important issue is there are attacks on the temples and also a forcible state-sponsored conversion is there. A temple chariot belonging to Antarvedi, likewise... Mr. Ravindra Kumar, you have 2 minutes, that's all, please. Yes, sir. And attacking also democratic institutions. The democratic institutions are also attacked. Recently, the government also directly made an attack on the judiciary. The government, in this connection, the proceedings are pending before the court, and the division bench of Honorable High Court has also observed it is also relevant to state at this juncture and to bring it to the notice of this Honorable Apex House
constitutional body, I wish to bring it to the notice of this body. The Honorable High Court made an observation that to some extent, even after getting success in overreaching and undermining two constitutional bodies, Legislative Council and the State Election Commission, it was the turn of the highest court in the state of Andhra Pradesh, that is High Court of Andhra Pradesh. The AP High Court, with a view to protect the right of citizen, has passed a number of orders setting aside incorrect and unsustainable orders passed by the government of Andhra Pradesh in the month of April 2020. The division bench, the Honorable High Court quashed government orders regarding the introduction of English medium in schools as compulsory subject thereafter. Social media was flooded with insulting and even abusing posts against the honorable judges of this court. Even the Honorable High Court was not spared. But further, the Chief Minister himself has written a confidential letter to the Chief Justice. Please. In this connection, please don't quote the Chief Minister. No, it's an observation of the court. It's not mine. Now the prevailing situation is there in the state of Andhra Pradesh. It's not my dialogue. It's the dialogue of the division bench. The observation made by the Honorable Division Bench. There is an alarming situation in the state of Andhra Pradesh. Unless the centre is looking into and concentrated on the failure of finally one sentence, sir. Till the publication for the Honorable Chief Minister, I was not having much information about him, but immediately thereafter, I became curious to know about him. Subsequently, I was told that I go on site Google and type only Kaidi number 6093. I can get many information. Accordingly, I did the same thing. Thereafter, I got very disturbing information. Please conclude. It is needless to state that the attempt of highly placed persons in media detrimental to the interest of the democratic state as guided by rule of law. A person who is under the cloud of charges in a criminal court, if provided with the authority of law, if pursues his anger on an organ of state, judiciary, please conclude. This conduct should certainly be debated before the constitutional courts for his continuance and his decisions taken during this period of governance. Thank you, Ravindra Kumar. 1 minute, sir. But I have given you 2 minutes, please. And I cautioned you also, you should conclude. Please conclude. Certainly have a bearing on the society at large. Perhaps the factors may have to be considered and for assessing and auditing the conduct of the popular government in the state of Andhra Pradesh. So, please. Sir, therefore, I request the central government and also Honorable Prime Minister, it is the high time to consider all these aspects and to satirize the things which are going in the state of Andhra Pradesh under the premise of popular government. Right. Thank you. Jyotiraditya Scindia, please. धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। 2020 सभापति महोदय पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव, कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख, खुशी की भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन आज ठीक 1 साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना की संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर देश में एक नई उमंग और एक नई जोश भर के आ चुकी है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ और हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना के राख से उठकर अब बस रहा है। कुछ दिन पहले सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद में भारत की इस अद्वितीय सफलता पर हमने जो चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों के लिए निपटने के लिए सरकार की कार्यनीति पर और उसी के साथ पूर्ण जीवित भारत की एक नई छवि पर उन्होंने प्रकाश डाला।
हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन उनसे मिला और उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त हुआ और मूल्यों सिद्धांतों के बुनियाद पर एकजुट होकर एक नया इतिहास और नई बुलंदियों छूने का एक प्रेरणा भी राष्ट्रपति महोदय से हम सबको मिला है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कोरोना सभापति महोदय एक अदृश्य शत्रु था जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल 2 शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, और केवल भारत के लिए नहीं लेकिन 150 देशों के लिए, जो एक तरीके से एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। सभापति महोदय, शुरुआत में सभापति महोदय कई विशेषज्ञों ने, और यह वास्तविकता भी थी, कई भयंकर अनुमान लगाए थे। 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 20 लाख जाने जाएंगी। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का एक उदाहरण दे पाऊं, क्योंकि एक क्रिकेट का प्रेमी भी मैं हूं, तो कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगाकर बाउंड्री को भी पार करा दिया है भारत ने। एवरेज ग्लोबल रिकवरी रेट विश्व में 70% है, लेकिन भारत की रिकवरी रेट 97% है, जो विश्व से सबसे बड़ा आंकड़ा है सभापति महोदय। और इसी के साथ वो दूसरा वेव भारत को छू भी नहीं सक पाया, और उसके पीछे कारण यह था कि नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। विदेशी नागरिकों के वीजाओं को हमने निलंबित की, स्फूर्ति से हमने लॉकडाउन लागू किया ताकि 37 लाख जानें बच पाएं, और उसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और इसलिए महासंकट की वित्तीय बोझ की चिंता न करते हुए, चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उन सब के लिए आर्थिक मार से बचाने के लिए सीधा उनके अकाउंट के अंदर राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक यह लॉकडाउन था सभापति महोदय, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर, एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी देश की जनता ने स्व इच्छा के आधार पर उस आह्वान और उस अनुरोध का पालन किया। और एक वो लॉकडाउन था सभापति महोदय 1975 में, जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया था। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। विषय यह है सभापति महोदय कि कोरोना के समय में भारत पीपीई किट कभी नहीं बना पाती थी, और 60 दिन के अंदर हमने केवल पीपीई किट का उत्पादन नहीं किया, लेकिन उसके अलावा
आज विश्व का द्वितीय उत्पादक देश भारत बन गया है पीपीई किट का। आज भारत में वेंटिलेटर्स का उत्पादन हो रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए विश्व में 10 साल लगते थे, लेकिन आज भारत के हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञों ने 1 साल के अंदर देसी वैक्सीन बनाकर भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है। और केवल ये नहीं, लेकिन वैक्सीन के बाद विश्व स्तरीय सबसे तेज टीकाकरण का अभियान 30 करोड़ लोगों तक फेज 1 में इसकी शुरुआत हुई। यह कारगर और किफायती वैक्सीन, सभापति महोदय, केवल भारत के लिए नहीं है। यह वैक्सीन एक वैक्सीन फॉर ह्यूमैनिटी बन चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने स्वयं कहा है कि भारत का टीका उत्पादन की क्षमता पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। And I'd like to quote him. He has said, "The production capacity of India is the best asset that the world has today." Unquote. और इसी प्रकार से वासुदेव कुटुंबक जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन मूल्यों और सिद्धांतों का भारत ने पूर्ण रूप से अनुसरण किया है। और इस सफलता के पीछे, सभापति महोदय, दूसरा हथियार है भारत का सामूहिक शक्ति, सामूहिक सामर्थ्य। हमारा अतुल्य वैज्ञानिक गढ़, हमारे वैक्सीन के ट्रायल के वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे एनजीओ, हमारे पुलिस फोर्स के कर्मी, हमारे जवान, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब की जान की रक्षा की। अगर वो न होते तो आज हम न होते। और आज इस सदन में, सभापति महोदय, कुछ पंक्तियां उनके लिए मैं अर्पित करना चाहता हूं कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बाज है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। जहां एक तरफ ये कोरोना का संक्रमण, सभापति महोदय, पूरे विश्व का आकर्षण बन गया, सारी शक्तियां इन पर लगी, दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, आजीविका हो, पूरे तरीके से नष्ट होने के कागार पर आ चुकी थी। और भारत भी टेक्निकल रिसेशन के खाई में जा रहा था। पर मैं दाद देता हूं हमारी सरकार को कि 6 महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि जनवरी के माह में जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ रुपए, जो राजस्व संग्रह का एक नया इतिहास बना है, सभापति महोदय। दूसरी तिमाही में जीडीपी नेगेटिव 0.5% तक सीमित हो गई, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, जो आज हमारे सांसद महोदय स्वपन जी ने भी कहा, कि इस वर्ष 11.5% ग्रोथ रेट जीडीपी की रहेगी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भी कहा है कि 1 वर्ष के अंदर भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पे उभरने की क्षमता रखती है। हमारी एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का एक टारगेट है, उस पर हम अडिग हैं। और उसी के साथ 5 मिनी बजट हमने कोरोना के समय में निकाला था और कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया था, मदद दिया था, और पोस्ट कोविड ऑर्डर में भी उन क्षेत्रों को उभारने का संकल्प हमारा है। इससे यह प्रचलित होता है, सभापति महोदय, कि कोई भी आपत्ति या विपत्ति आई, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे किसी तरीके की भी विपत्ति हो, हमारी 130 करोड़ जनता, हमारे भारतीयों का वर्तमान और भविष्य
कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन इसी के साथ थोड़ा दुख भी होता है सभापति महोदय कि जहां एक तरफ देश की जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे। लॉकडाउन क्यों? कितने दिन? किससे पूछ के किया आपने? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों? कब होगा? कैसे होगा? किससे पूछ के किया आपने? प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपनी रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है। और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट for the management of COVID-19 pandemic. The lockdown gave the country time to ramp up its public infrastructure, build the capacity of hospitals and health workers. Unquote. और इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज 3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए आपातकालीन परमिशन देश में क्यों नहीं दे सकती? प्रश्न यह है कि एक नेता ने इतना भी कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है, स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसके बाद कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं। तो मैं बड़े विनम्र पूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार थी, जो स्वास्थ्य का बजट था 5 सालों का, सभापति महोदय 1 साल का नहीं, 5 सालों का 1,44,000 करोड़, उन 5 सालों में यह बजट को भी पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, केवल 1,26,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, मतलब 15% कम। और आज ढांचे की बात की जा रही, 2013 में तो 18% अंडर यूटिलाइजेशन रहा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, जो कई गुना ज्यादा, उस बजट के आवंटन से 2 से 9% ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, तभी भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर पाएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह कहानी यहां नहीं रुकती। इस साल के बजट में मैं वित्त मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस साल के बजट में सभापति महोदय, आपको भी आश्चर्य होगा कि 5 साल के यूपीए सरकार का स्वास्थ्य बजट 1,75,000 करोड़ 5 साल,
और 1 साल का एनडीए सरकार का स्वास्थ्य बजट इस वर्ष का 2,23,000 करोड़ सभापति महोदय, और पिछले वर्ष से 137% वृद्धि। 22 नए एम्स बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, ये केवल मुहिम नहीं है सभापति महोदय, ये आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार और असरदार बनाने के यंत्र है। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए, और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी, परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में, और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था। As you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment, and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure, including the cold chain. And for this, private sector participation is essential. I repeat, and for this, private sector participation is essential. निजी क्षेत्र का निवेश अनिवार्य है, for which a policy environment needs to be in place. In this context, the need to amend the present state APMC Act
on the lines of the Model State Agricultural Produce Marketing Act 2003 to encourage the private sector, I repeat, the private sector, in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers and producers and consumers cannot be overemphasized. Unquote. तो आज सहमति है? तो सहमति है? तो सहमति है? अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं। कई चीजों में सहमति होनी चाहिए। टीएमसी की सहभागिता। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अड़ग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न यह है, the hypocrisy would not have been there if you had not done the hypocrisy with the people. Yes. Please understand that. Let us not get into personal. प्रश्न यह है सभापति महोदय कि जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में 2013-14 में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 2013-14 में जो 236 करोड़ रुपए का केवल देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था, उस 236 करोड़ को बढ़ाकर 40 गुना 10,550 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कपास के किसानों के लिए जो 2013-14 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किया था, उसको 300 गुना बढ़ाकर 26,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया हर साल 1,13,000 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाया हो, जिस किसानों ने कृषि के अधोसंरचना के लिए नया फंड तैयार किया हो 1 लाख करोड़ का, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए फसल बीमा योजना लागू करके 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाया हो, वो सरकार किसानों के विकास और प्रगति के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया और उसके बाद भी जब यह सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है। आज मनोज झा जी ने कहा था हमें सुनना भी होगा और सुनाना भी होगा।
सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहा था। एक तरफ सभापति महोदय जहां पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा था, विकास के एजेंडा को दरकिनार करके पूरा विश्व इस महामारी और प्रलय का सामना कर रहा था, सारे संसाधन झोंक दिए। भारत में एक कर्मरत प्रधान सेवक ने, जिनका नारा पार्टी का नारा था सबका साथ और सबका विकास, उस संकट को सुधारने के लिए केवल कार्य नहीं किए, लेकिन उस समय में अवसर भी ढूंढ लिए। एक सपना था हमारे पूर्वजों का, आजाद भारत का, स्वराज का, और आज एक सपना है भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, जो देश को विश्व पटल पर उजागर करने का सपना है। हमारे महाभारत में लिखा गया है, अपि शक्कम 95 सुखम वही मग्य वनग्रे अरिजतम स्वयं वीरण नव पश्चिते कंचना। और इसका सार है सभापति महोदय कि किसी दूसरे पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदायी होता है। और यह तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बन पाए। और आत्मनिर्भर भारत की आत्मा किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए इस महाप्रलय के समय में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 2,76,000 करोड़ योजना का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने किया। ज्योतिरादित्य जी, अपना पार्टी ने आपको जो समय दिया वो समाप्त हो रहे। 5 मिनट सर। ठीक है, राइट। Your party has got time. They have agreed 5 more minutes, please. Thank you, sir. Thank you. I will not take more than 5 minutes, sir. 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक निशुल्क राशन प्रदान किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का एक नया इतिहास रचा। उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ गैस सिलेंडर्स महिलाओं को पहुंचाई मुफ्त में। और इसके पीछे कारण क्या सभापति महोदय? इसके पीछे कारण यह कि सरकार का लक्ष्य अंत्योदय, सरकार का प्रण अंत्योदय और सरकार का पथ अंत्योदय। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है सभापति महोदय जिसके आधार पर हम अपने मानव संसाधन को मानव पूंजी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। नई शिक्षा प्रणाली हम लेके आए हैं 34 साल बाद, और उसमें शिक्षा के नए रूप, नए सोच, नए स्किल से एक नया भारत को उभारने की कोशिश हम लोग करेंगे। 2021 का भारत सभापति महोदय 2013 का भारत नहीं। यहां एसएमईज को एमएनसीज में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 20,000 करोड़ का सरल ऋण उन एसएमईज को हमने दिलवाई है। एमएसएमईज की परिभाषा हमने 14 साल बदली है और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। यह वर्ष सभापति महोदय केवल संकट का नहीं, लेकिन सबसे ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें शेष था इंडिया को भारत से जोड़ना, हमारी पुरानी संस्कृति को पुनः जागृत करना और श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन सिर्फ देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राष्ट्रीयता की भावना, उनकी औजस्व नेतृत्व का परिणाम है कि अब राम मंदिर का निर्माण नए भारत के निर्माण का प्रतीक बनेगा। और उनके शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को जोड़ने का, स्व को संस्कार से जोड़ने का कार्य संपन्न होगा। सत्य, अहिंसा, आस्था, वासुदेव कुटुंबक, विविधता में एकता, बलिदान,
ये वह मनके हैं हमारे देश के जिसको हजारों साल से सभी भारतीयों ने एक माला में पिरोकर एक नया भारत पुराने मूल्य के अभाव पे खड़ा नहीं हो सकता। हमारा राम मंदिर आधुनिक भारत की मजबूत नींव का प्रतीक होगा, जिसकी विविधता में एकता भी होगी और समता भी। जहां एक तरफ यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, वहीं दूसरे तरफ हमारे देश का ताज और शान जम्मू कश्मीर में, जहां देशवासियों का हर दिल बसता है, उनको बेड़ियों से मुक्त करके राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कदम लिया गया। जब अनुच्छेद 370 को हमने रद्द किया, उस अनुच्छेद से केवल हानि हो रही थी। अलगाववाद, आतंकवाद, व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार, और जब यह रद्द किया गया, उसके सीधे सीधे बाद आयुष्मान भारत के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संरक्षण में 1.5 करोड़ जनता को लिया गया। हर एक नागरिक को केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल पाया। और पहली बार इतिहास में, जिसका संदर्भ गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कल दिया, पहली बार इतिहास में 70 साल के इतिहास में जिला विकास परिषद डीडीसी का चुनाव हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। सरकारें आई भी और गई भी सभापति महोदय, लेकिन जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो सपना बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का स्वप्न जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का सपना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसे मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया। अंत में मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि कोरोना के महाप्रलय में जो विकास के पथ को कुचलने आया था, एक बुलंद ढाल की तरह हमारी सरकार ने उसका सामना किया और विपत्ति को भी अवसर में बदलकर रिफॉर्म्स की झड़ी लगाकर न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा, माननीय राष्ट्रपति जी की सोच और विचारधारा के आधार पर मार्ग देश का प्रशस्त किया है। 2 बार केंद्र में भारी बहुमत, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, असम से अरुणाचल से गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार तक जो असीम आशीर्वाद चुनाव में, मध्य प्रदेश भी असीम आशीर्वाद जनता का मिला है। यह आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की है सभापति महोदय, और यह तभी संभव हो पाया है जब एक प्रभावी छवि, असरदार नीति और विजन भारत के लिए का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने की है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत एक नया सामर्थ्य के साथ इस कोरोना काल से उभर रहा है। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्लीज श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी बनेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उसका कहीं उल्लेख तो है लेकिन गलत आंकड़े दिए गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, जी हां, ये उन्होंने पालन किया क्योंकि टोटल गवर्नेंस आज पीएमओ के पास है, बाकी मंत्रियों के हाल है आप जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रोजगार मिला नहीं, कालाधन आया नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई नहीं, इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी थी। 2014 के बाद पहला निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया नोटबंदी का, और उस नोटबंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान था, मैं इसी राज्यसभा के सदन में, इट इज अ मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट will hurt small and MSME, unorganized sector, agriculture and the poor. It is an organized loot and legalized blunder, and there will be a 2% drop in the GDP. जो उन्होंने कहा था, एक एक बात सही निकली है। नोटबंदी के लिए ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। उस समय डिजिटल ट्रेडिंग की वकालत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। उस समय सर्कुलेशन ऑफ करेंसी 17.5 लाख करोड़ था। आज 2021 में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी हैज गॉन अप टू 27.8 लाख करोड़। What has happened, Honorable Prime Minister? Will you please answer? Or Honorable Finance Minister, will you please give us the details? अर्थव्यवस्था बिगड़ी, 50 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और हमारे एमएसएमईज ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और आज तक वे उठ नहीं पाए हैं। आप लोग कानून लाए, आपके एजेंडे में था, धारा 370 समाप्त करेंगे, आपने किया। लेकिन अटल जी ने जो बात कही थी कश्मीर समस्या के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है, उन्होंने कहा इसका हल है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। इन 370 का कानून जब आप लाए तो कहीं भी किसी प्रकार से ना जमहूरियत नजर आई, ना इंसानियत नजर आई और ना कश्मीरियत नजर आई। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है, और यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे तरीके से पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा लोग आतंकवाद की गतिविधियों में आहत हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल आहत हुए हैं। और जो कश्मीर घाटी के लीडर्स जिन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत हमेशा चुनाव लड़े, सरकारें बनाई, आपने उन सब लोगों को जेल में बंद कर दिया। क्या यही जमहूरियत है, यही इंसानियत है और यही कश्मीरियत है? आप सीए एनआरसी लाए
ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप लाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास। 2019 में उन्होंने जोड़ दिया सबका विश्वास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के लोगों का विश्वास सीएए और एनआरसी लागू करने के लिए उनका विश्वास उन्होंने लिया? क्या उन वर्गों का उन्होंने विश्वास लिया जो कई दिनों तक ठंड में आंदोलन करते रहे? आज यदि आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये धीरे धीरे ये सरकार विश्वास खोती जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत कुछ बातें हमारे सिंधिया जी ने और हमारे मित्रों ने यहां कही है कोरोना वायरस के बारे में। पहला केस चाइना में डिटेक्ट हुआ दिसंबर 2019 में। भारत में जनवरी 2020 में केरला में केस डिटेक्ट हुआ, उसकी डेथ हुई। राहुल जी ने 12 फरवरी 2020 को यह बयान दिया था कि ये पेंडेमिक आ रहा है, होशियार हो जाइए। फिर उन्होंने दोहराया 3 मार्च 2020 कि इसमें आप सचेत हो जाइए, इसकी तैयारी करिए। उनके बयान का मखौल उड़ाया गया। 5 मार्च को पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने केवल चाइना और हांगकांग के आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करी, लेकिन उस समय तक 20 राष्ट्रों में कोरोना के केसेस आ चुके थे, रिपोर्ट हो चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना जरूरी था। 24 और 25 फरवरी को उस देश से जहां की कोरोना वायरस के केसेस थे, उनके लिए लाखों लोगों को नमस्ते ट्रंप के नाम पर उनको इकट्ठा किया गया और यहां के अहमदाबाद की गरीबी और झुग्गी झोपड़ी को ना देख पाए, उसके लिए दीवार खड़ी कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने, माननीय सिंधिया जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, उसका उल्लेख कर रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव आप और हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। किन कारणों से वे पार्टी छोड़कर भाजपा की शरण में गए मैं नहीं जानता, वो ज्यादा जानते होंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना वायरस के प्रकोप को टालने के लिए उन्होंने उसको टाला, क्यों टाला? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उनको समय चाहिए था और जिस दिन सरकार उनकी बन गई उस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के पहले जनता कर्फ्यू, थाली पीटिए, दिया जलाइए, घंटी बजाइए, कोरोना वायरस 21 दिन में चला जाएगा, महाभारत 18 दिन में जीते थे। ये जिस इस सोच का प्रधानमंत्री इस देश में हो, इसका हम लोग क्या कहें? मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन लगाया, अरे सिंगापुर जैसे राष्ट्र ने 8 दिन का समय दिया और भारतवर्ष के अंदर 4 घंटे का समय, 4 घंटे में लॉकडाउन। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मेरा यह आरोप है। और ये सदन जो कि हाउस ऑफ द स्टेट्स है, उसके अंदर सिंधिया जी चले गए, अच्छा ठीक ठीक है, आ जाए, अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिना मुख्यमंत्रियों से चर्चा करे, बिना राज्यों से चर्चा करे, 130 करोड़ की जनता के देश में 4 घंटे का समय आपने दिया लॉकडाउन लगाने का, आपने सूचित भी नहीं किया। और उसका क्या कार्य, उसका क्या हश्र हुआ? माइग्रेंट लेबर पूरे देश में परेशान हो गया। उसको उम्मीद थी
कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, 21 दिन बिता लेंगे। लेकिन जब उसको लगा कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसके पास न पैसा था, न खाने का, न पीने का, रहने का, न किराए का, न रेल, न सड़क की कोई बसें, क्या करता? लाखों लोग पैदल निकल पड़े और निकल पड़े, सैकड़ों लोग की मौत हो गई। गर्भवती महिलाओं को बच्चा पैदा हो गया और कुछ तो पैदल चले। एक महिला तो साइकिल पर बैठाकर अपने पिता को झारखंड तक ले गई। ये यदि लॉकडाउन का समय आप 8 दिन का दे देते, 7 दिन का दे देते, तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। आपने थाली बजाने के बजाय, घंटी बजाने के बजाय कह देते कि हम फला तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप सब अपने घर चले जाइए। स्टूडेंट्स फंस गए, यात्री फंस गए, टूरिस्ट फंस गए, और जो हालात हुए आप देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन पैकेज आपने 20 लाख करोड़ का दिया, अन्य विकसित देशों ने ग्रांट के रूप में दिया, आपने लोन के रूप में दिया। अप्रोच गलत था। वित्त मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे कहना था, यदि डिमांड स्टिमुलस का आपका पैकेज होता तो हालात सुधरते। लोगों को उनके हाथ में पैसे की आवश्यकता थी, लोन की आवश्यकता नहीं थी। उनको आज आवश्यकता इस बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग उनके हाथ में पैसा दें, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप न्याय योजना के अंतर्गत, जिस तरह हमने प्रस्तावित किया था, उस न्याय योजना के अंतर्गत आप गरीब और मजदूरों के और बेरोजगारों के हाथ में पैसा दे दीजिए, हम अपना परिवार चला लेंगे। वो आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत परेशानी आई। माननीय सभापति महोदय, आपदा में अवसर मोदी जी खूब अच्छा जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी आपदा में अवसर निकालने में माहिर है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए, पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में। जब प्रधानमंत्री पीएम हमारी रिलीफ फंड पहले से था, तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? और उसमें भी ना वो आरटीआई से को हम जवाब ले सकते हैं और ना उसके बारे में कुछ हम हिसाब मांग सकते हैं। और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। जो वेंटिलेटर की कीमत तय की गई, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ मैं माननीय सभापति आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा है कोविड सिचुएशन को डील करने में। आपने वैक्सीन का आप काफी श्रेय ले रहे हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, जिसको वैक्सीन लगवाना हो लगाए, लेकिन 35,000 करोड़ का प्रावधान आपने वैक्सीन के लिए रखा है, कितने लोगों को लगा पाएंगे आप? साथ में मैं चाहता हूं कि उसका जो क्लियरेंस मिला है, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इमरजेंसी यूज। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछला सत्र राज्यसभा के इतिहास, संसदीय इतिहास में काला सत्र माना जाना चाहिए। आपने किसान और मजदूर और सहकारिता आंदोलन के खिलाफ आप जो ऑर्डिनेंस लाए, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला ऑर्डिनेंस कौन सा लाए? लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त किया जाए। ये तो भला करे उस समय के लोगों को, जो समझदार लोग थे उस समय। आज तो केवल प्रशंसक लोग रह गए हैं जिन्होंने कि उनको बाध्य किया कि आप ऑर्डिनेंस समाप्त, उसको लैप्स होने दीजिए। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका जवाब और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे, उसका आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके गुण दोषों पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है।
अगर चर्चा होती तो उसके क्या क्या कौन कौन से एक्ट में कहां क्या कमी मैं आपको बताता। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में टेक 5 मिनट्स मोर सर, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसको पटल में रखना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा है, आज अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेड यूनियंस के बारे में, जो मजदूरों के हक में 44 कानूनों को खत्म करके 4 उन्होंने लेबर कोड बनाए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं कर रहे। भारतीय मजदूर संघ ने भी उसका विरोध किया है। जिस तरह से कृषि जो किसानों विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है। लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है। किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन भी समाप्त करने का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन आप देखेंगे, वो भी ऑर्डिनेंस आया है, जिसमें कि अब शेयर्स कोऑपरेटिव के विभाग के शेयर्स लिस्टेड होंगे अब शेयर बाजार में। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आदमी कोऑपरेटिव सेक्टर के किसी भी बैंक या मार्केट फेडरेशन में ये उसमें शेयर खरीद सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहकारिता आंदोलन के भीष्म पितामह सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने 600 फुट की मूर्ति तो बना दी, लेकिन उनकी जो विचारधारा था, उनका जो सोच था सहकारी आंदोलन का, जिसके माध्यम से किसानों के प्रोसेसिंग को इन्वॉल्व करके सारा, आज अमूल एक हमारा एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें किसान को लगभग 70% उसका वैल्यू मिल जाता है। आज उनकी आत्मा को आपने खेत पहुंचाया है। मूर्ति बना दी आपने, लेकिन उनकी जो सोच थी, विचार थी, उनकी आत्मा थी किसानों की, उसको आपने खंडित किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा विवाद, हमारा आज भाजपा से हमारा विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इन 7 सालों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का उपयोग केवल अपने विरोधियों को समाप्त करने में लगा है, इस मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी किसानों से चर्चा करने के लिए उन्होंने बस 2 मिनट्स मोर उन्होंने ठीक है कृषि मंत्री जी को लगाया, साथ में पीयूष गोयल जी को रखा है। पीयूष गोयल जी का कोई लेना देना है किसानों से? अरे किसी को रखना था तो राजनाथ सिंह जी को रखना चाहिए था। किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी पूरे किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे हमेशा। मैंने उनके 2 वीडियो देखे हैं, राकेश टिकैत के साथ उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं, हम किसान का साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया। पंजाब में केसरिया पगड़ी लगाकर उन्होंने वादा किया था हम किसानों का साथ देंगे। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौते में करने में क्यों नहीं लगाया? पीयूष गोयल जी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आखिरी में, जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ सेडिशन के केसेस लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ उन पर केसेस लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे
भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि कल मैंने इस बात को कोट किया था उनको कि यदि किसी भी लोकतंत्र में यदि लोगों को के भावनाओं को देशद्रोह के राजद्रोह के रूप में देखा जाता है तो फिर शुरुआत होती है तानाशाही की। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय हमारे रविशंकर प्रसाद जी बैठे हैं, गहलोत जी बैठे हैं, आप लोगों को बहुमत मिला है, हम उसका मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज देश में पूरे तरीके से लोगों को डिसेंट, आज लोकतंत्र में तो डिसेंट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जिस प्रकार से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। भीका कोरागांव केस में लोग सुधा भारद्वाज जो कि पूरे तरीके से वहां पे यूएस में हार्वर्ड प्रोफेसर थी, आज 3 साल से उनके साथ उनके अनेक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या दोष था उनका? इतना ही तो था कि उन्होंने भीका कोरेगांव के अंदर उनका पक्ष लिया जो वंचित थे, दलित थे। मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी हालत में हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। I'm sorry. Can we have the microphone? Honourable Member Shri Derek O'Brien ji was supposed to speak, but since Honourable former Prime Minister Shri Devgowda ji has requested, so Derek ji is happy to give him his slot. May I now request Honourable Member Shri Devgowda ji to speak for a few minutes on this topic. बैठ के बोल सकते हैं sir. You can sit and speak. Honorable Chairman, sir. Today, So if you'd like, you can sit and speak, sir. I had permitted to speak for a few minutes on President address. I don't want to take much time. There are several subjects mentioned in the President address. Sir, being a farmer, I dealt with the farmer subjects on several occasions. The contention is now about the 3 bills that has been enacted by the House. Though on the day there is no proper proceedings were able to conduct it as the House was not in order. Sir, today small and marginal farmers are more than 90%. Their holdings is half an acre to 1 acre. Now, to protect their interest, the bills that have been enacted, the impression of the government is that is going to be solved. In my humble opinion, it may be very difficult to solve the problem of the small and marginal farmers. Almost all the previous governments have done to see that the farmer's condition is to be improved. But net result is now the urban area is now improving.
The farmers are suffering and they are now migrated to cities. When we are in office as a coalition government, sir, the situation, what I have understood at the time, the farmers are in a very poor condition. We have taken certain decisions to help the farmers. The decision which I have taken under the leadership, under the coalition government which I have been asked to perform as a Prime Minister. 50% subsidy we have given to the tractors, power tillers, drip irrigation and sprinkler irrigation, micro irrigation, all the concerned equipments were given 30 to 50% subsidy. I think Punjab has most benefited at that time. When we took an decision for the poor people also classified not by any presumption or assumption. Lakdawala committee has taken the decision at the time. I think Madam Gandhi has been appointed that committee, Lakdawala committee. They gave the report. Nearly 36% is below poverty line. To help those people, 10 kg of rice, 5 kg of wheat, 1 liter of mitti ka tel, and 1 kilo sugar. We have taken the decision. At that time, the expenditure, how to meet, was one of the major issues. Nearly 8,900 crores for the expenditure for this particular purpose. I don't want to deal with all those things. But the point is, having the experience of this farmers' problem for the present government, with 7 years experience as Prime Minister of this country, he has taken several decisions for the farmers to help. There are so many issues which I can quote. Not going to dispute the programs that have been announced and implemented from last 2014. They have got some results. Only one point I would like to tell this Honorable House. The farmers are not so much educated. The MSP in the bills, what they want to do, they think that they are going to avoid middlemen. In my humble opinion, it is not so easy to avoid the middleman by implementing these 3 bills. When the issue was started by the farmers of Punjab and Haryana, the agricultural minister has really taken the interest to call them and try to persuade them. 11 times they have met. And he made a promise that I am going to, whatever the amendments you want to suggest, you can suggest. I will improve and I will try to see that your problem is going to be solved. That is the assurance given the farmers' delegation. But their demand is to replace
the bills must be withdrawn. That is the condition that you are trying to went on fighting this battle. Now, Prime Minister is honorable, no, the President, Prime Minister, it is a speech, of course, from the mouth of the President of India. The Prime Minister has narrated all these details. The Apex Court has stated the implementation of these laws. My government respects the decision of the Apex Court and shall abide by it. Sir, Apex Court has stayed. It has not been asked to replace it. It has been stayed. What next? Now the agitation is going on. And there are certain miscreants, certain antisocial elements has brought bad name on 26th Republic Day. We are all very much unhappy for that incident that has happened. A very political party condemned it. But those miscreants has to be punished. They have shown the disrespect to the national flag. Everybody agrees this. There is no dispute on this. But the farmers were fighting. Still the struggle is going on. The government has taken the decision to put concrete walls on the other side. But that is not going to solve. There must be a congenial atmosphere to see that the whole matter should be ended peacefully. That's my concern. I know police have taken very action not to go for firing. They are very much restrained. All these things, let us be frank, there is no question of fighting this side or that side. My concern is, as a farmer, in the last leg of my life, the matter should be ended. I demand the government peacefully, let them call the delegation, farmers' delegation. If need be, some of the leaders in this house also can join. And we can also give our suggestions to close this matter. Otherwise, things are not going to run smoothly by the government. They think that we are going to solve by taking all steps to punish those people. They are not at all responsible for that incident. The farmers are not responsible. Some miscreants, some anti-social element, for that farmer should not be punished. It is a state subject. It is in the concurrent list. Sir, the matter when these three bills were placed, state government's opinion also has to be taken at that time. That is the one thing. Other one, few points. I don't want to, I can understand your feelings. These river linking. Karnataka is Kaveri Basin, deficit basin. Sir, the Honorable the Minister concerning interviewing Kapulas, recently the central government has announced 90-10 funding pattern for Ken Betwa interlinking project. That is going to help Gujarat and Maharashtra. Sir, during Vajpayee's period, I think first when Indira Gandhi was the Prime Minister, K.L. Rao was the Irrigation Minister from Andhra. He was the person initiated for linking the rivers of Mahanadi to Kaveri through
Ganga. So that was the earlier stage. Now, during Modi's as Prime Minister, the first step they have taken. Now, I only request, as Kaveri is deficits the state, Kaveri River itself is a deficient river. We are fighting Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. I am not going to say that matter was almost concluded by the tribunal, but still notification has not been made. That is the position. So I only request the Honorable Prime Minister to see that the preference also should be given to Kaveri and Mahanadi river link. Sir, the Karnataka now, HAL was almost to be one of the important public sector undertaking. Now, this government, they must congratulate about 83 indigenous fighter aircraft were given for the manufacturing. It cost about 48,000 crores. So that is one of the major steps taken by the government of India that I must welcome it. Sir, the urban and rural, we are all coming from the rural area. Why the so-called agricultural sector, they are now coming towards the urban area? There they are not going to get the jobs. Honorable Sir, only 2-3 points. The slums are increasing and there is no proper living in the rural area. That is the reason they are migrating from these towns. Now, how many slums are there? What is their condition? I am not going to say anything about this government is responsible. Dr. Manmohan Singh also taken several steps. But the problem is, as the situation is very bad in the rural area, they are going to now, once we are thinking about 75 to 80% working force in agriculture sector, now it has come down to 50%. My humble opinion, I am not going to say statistics is in my hands. That is the real fact. Now, there are several areas where we have to further take steps to improve the condition. Now, what type of help we are given to the slum dwellers? Water, light. And they are living in the same house. What they are living about 30, 40 years back, the same condition. The living condition has to be improved. Now, the urban and rural disparity is so much, the gap. Naturally, whatever steps we take, it is not so easy. This government has also announced so many programs, but only thing is, this will go on. 75 years of independence we have passed. Housing problem we have not completely solved. Drinking water is one of the major issues because the water level, the groundwater level has gone down. In the previous regimes, we used to take groundwater, supply to all the villages. Now as the groundwater has gone, we have to search for the water from the dams and lift that and give. To solve the drinking water problem. This is one of the major issues. In Karnataka, we had the 6 or 7 districts. I am not going to name the districts. There is so much problem for the drinking water. They are struggling. See, that is to be funded by the government of India, whatever the state government is proposing for that. With these words, I would like to conclude. I know your mind. You have cautioned me 2-3 times. I am so happy my colleague has given
sometime you have taken the I am watching. I don't want to further encroach upon the time of our friends on both sides. With these words, I would like to conclude. Thank you very much. Thank you, Honourable Member. Honourable Member Shri Derek O'Brien ji to speak in Bengali. Sir, I'll speak in English. Little Bengali also. Sir, in these times, we must be thankful for small freedoms, like the freedom to speak without the mic being muted, like the freedom to speak without the video feed being censored, like the freedom to speak and express ourselves in this Council of States as per the rules without being dragged out by marshals. Yes, sir. These are small freedoms, but in these times, we must cherish these freedoms. This is what MPs, elected MPs, all bar 12 here, everyone else has been sent to this Rajya Sabha by at least 25, 30, 40, 50 MLAs who have been elected. Those MLAs from the states have elected us and sent us here. So, sir, if we are feeling the pursuit, the intimidation, the hounding, what are journalists feeling? What are farmers feeling? This is not about MPs, this is not about journalists, this is not only about farmers. This is about the Indian citizen. Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, whenever we've spoken on the President's address in the last 22 years, we've never moved and voted on a motion against the President's address. We may completely disagree with it, but that is the parampara of our chairperson, our founder chairperson, that no, stand up, oppose, give your views, but the President in some way is actually presenting what the Council of Ministers have put together, or the Prime Minister has put together. So I've got no quibble on that, but allow us, we will today speak on what was not in the President's address, or what could have been there. Sir, because this government has failed India. Now that's not rhetoric. This has failed India at many levels. In the time I have in hand, I may touch about 10, 11 levels in which this government has failed India. Sir, it has failed to uphold the sanctity of Parliament. What happened on September 2020, September the 20th, 2020. Sir, the great tradition here and the rules of the House. And a lot of young people have been asking me in the last 4 months, what exactly happened? What is the rule? So I think a lot of young India needs to understand what exactly was the rule, what happened. And I'm not passing any judgment on the chair. I'm just recounting the events. Here's how it works. When the government brings a bill, any member can, before that, a little less noise please, before that, bring a resolution. So multiple members brought resolutions. You can't just suddenly decide 2-3 hours before. You have to give these resolutions 1 or 2 days in advance. The resolution said that these 3 bills should go to a select committee. Now, this is interesting because who is the chairman? Who will be the chairman of that select committee? Why is the select committee put together in the first place? A select committee is put together so you can further examine the bill. Now, who will be the chairman of the select committee? The government will be, in this case, the BJP. Who will have the majority in that select committee of 30 members? The government. Why? Because they have a majority in the Lok Sabha, those numbers, and here Rajya Sabha reflected. So there also you'll have
the numbers. And the third thing is, who will sign off on the final report? There again, the government. All the opposition was asking for, and multiple parties, was send all 16, 17 parties, doesn't matter who gave the resolution, is please send this bill to a select committee. The select committee can have a discussion with everyone on board, take 3 months, take 4 months. No. And this government failed the sanctity of parliament because of its arrogance. These were the rules in parliament. Rule 252 is a very simple rule. It's not somebody who just puts up his hand and says, I want to vote. No, no, no. It's decided before, because the notice is given before. I don't want to get technical, but this is the reality which needs to be known. So what did the opposition do? 7 members of the opposition, believing in this cause for farmers, were suspended. How did we register our protest? For the first time since independence, to my knowledge, 7 MPs spent one night by the Gandhi statue. Oh, and some of us thought, oh, our friends and relatives said, wow, you did a good job. No. Small drop in the ocean. That September 20th was a drop in the ocean, sir. I'm hearing a lot of people saying, the opposition is not strong, the opposition is not united. The movement, that's why I said after a drop in the ocean, look what the farmers have done. It is their movement. It is not anybody in the opposition movement. Look what they have done. And today, the All India Trinamool Congress feels that yes, we must participate in this address, but how in our small way can we bow our heads to these 160 or 170 farmers who've passed away? 194, 200. Sometimes our words are not enough. So what we thought, my colleagues in the Trinamool Congress who are here, I can only tell you what they will do. Shukhendu Shekhar Roy, Dinesh Trivedi, Nadimul Haq and all our Rajya Sabha MPs. I'll cut short my speech now for 1 minute, and the 4 of us will stand in tribute to the farmers who lost their lives. And I will continue after that. I cannot speak for everybody, I can only speak for Trinamool. Thank you. Sir, when it comes to farmers, I represent a lady who knows a few things about farmers. This is well documented modern Indian history. 26-day hunger strike, not in Chingu, but in Shingur, is documented modern Indian history. So I wasn't surprised when a few days into the farmers' agitation, Mamta Banerjee, it was December the 4th, she said, please go there with the MPs, make sure no party flag, no symbol, avoid television cameras. Just go there and listen to the farmers. And we went. Again, December 23rd, again we went and listened. Harbhagwan Singh, Rajpal Singh from Hoshiarpur, Harveer Singh from Amritsar, Gurpal Singh from Hoshiarpur, and at least 25-30 who we met separately from Taran Sahib. We heard their stories. They didn't know about some parliamentary rules, but they were expressing themselves
and we were doing what? We were listening. So, 26 January, I think the whole House has agreed on what we all feel. But just imagine if that tractor incident, that unfortunate tractor incident where a farmer died under mysterious circumstances, just imagine if that happened in Bengal or Maharashtra. I am not yielding, let me finish. I am not yielding. Sir, I am not yielding. Sir, I am not yielding. Sir, I'm not yielding. This is the issue, huh? I'm not yielding. Let me finish my point. Imagine if that had happened in Maharashtra or in Bengal. Who is in charge of law and order there? All I'm saying is let the truth be told. I'm not coming to any conclusions. Let the truth come out. Who is in charge of that? The Home Minister of India is in charge. Do a proper inquiry and let the truth come out. What more am I saying? What more am I saying? Political and administrative responsibility is with the Prime Minister and with the Home Minister. Let's be very clear about this. Now we come to the farmers. Now they say 18 months. How is this done? How is this done? Because there's no Mr. Arun Jaitley to spend half an hour to try and understand and explain. This government, very clear, it's our position, I'm sure it's everybody's position, the repealing Bill 2021 that will repeal all those 3 farmer bills, because you've asked for 18 months in any case. I've taken the liberty, in all humility, we've taken the liberty of drafting the repealing bills. And I will share it with them. You repeal these 3 bills. There's a way to do it. Follow the system and do it. 18 months you'll put it on pause. How? This is the way to do it. So when it comes to farmers, you have to see from which party I'm speaking from. I'm speaking from the All India Trinamool Congress. The Prime Minister of India said by 2022, farmer income will be doubled. That's a promise. At current rates, if that were to happen, it will not happen before 2028. 2028. Double. Bengal mein kya hua? Trinamool government mein kya hua? From 2011 to now, not double. The farmer income has been tripled in West Bengal. Sir, let's talk more about farmers, because sometimes the arrogance, the hubris is not letting the government listen. So take some examples. 5,000 per acre is Krishak Bandhu scheme in Bengal. Kisan scheme from the Prime Minister is 1,200 per acre. Sir, scheme, Bangla Shishyo Bima, who pays the premium for the farmer? The farmer doesn't pay. The state government pays. The PM Fasal Bima Yojana, the farmers have to pay the premium. And I'm glad about 1.5 years ago when I spoke on the subject, the Agriculture Minister was here and he acknowledged this. He acknowledged this, sir. That is why I'm saying it with a lot of pride. For the agricultural farmers, the last 5 years, not because any political party gave it, the government of India gave Bengal the award, sir. And if you're talking about farmers, let's talk about how this government views farmers from different states. And I'm very happy that the government acquires on behalf of FCI from different states. Doesn't matter which state, the more you acquire, the better. Now, let's go with rice. Uttar Pradesh, 71 lakh metric tons. Good. I'm happy for Uttar Pradesh. Haryana, 64 lakh metric tons. Telangana, happier, 111 lakh metric tons. Bengal, we know how much they love Bengal. No lakhs. The largest
rice producers for central government schemes 76,000 metric tons. These are numbers I'm giving you on the floor of Parliament. Dispute them. This government has failed in COVID preparation. I say preparation. We all know about the visit. Today we're getting touchy about other people commenting on things which are happening in India. Who said this line before the Trump campaign? Ab ki baar Trump sarkar kaun bola tha? Uddhav Thackeray ji ne bola tha, Mamata Banerjee ne bola tha, Hemant Soren ne bola tha. We're talking about interference. Preparation of COVID. 11th of March, COVID was declared. WHO declared it a pandemic. We were all here in Parliament. Where is my senior colleague Dinesh Da was here. He told me that day. He's much senior to me. He said, Parliament chalega. I said, kya bol rahe ho? He said, हाँ. Madhya Pradesh, tab. That's the second failure in the preparation. The third failure of the preparation, 24th of March, which we all know, 4 hours. Then is very interesting, because then, and I'm willing to say, yes, this part was well done, the center after that figured, after bulldoze, 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 then figured the states are the implementing authority. And today, as much as the BJP want to take credit for all this, the states are the implementing authority. After the hodgepodge made in March, things have got better. Things have got better. One chief minister wrote to all chief ministers saying that trains, migrant workers, check that letter. 26th of March, one chief minister, Bengal, isolation wards were set up. So in the COVID preparation. Now what are you doing? This is what we actually love about this government. When it comes to taking the credit, center will take the credit. And when it comes to passing the buck, pass the bucks. This is the Council of States. I would appeal to all the states, find out how much your state was given for COVID. I've got the Bengal numbers. Bengal have spent 4,000 crores on COVID. Needed 11,387. Here's another number for you in Parliament. 279 crores. Now you want to come and win Bengal. Maybe some of the next speakers from the BJP will answer these questions. Maybe the Prime Minister will answer these questions. Maybe the Home Minister will answer these questions. Because so far we've had 2 newbies, with all respect. 2 newbies have spoken for the BJP, and it's their prerogative. They can have anybody who speaks. You know, sir, there are 2 types of girls or boys in the class. One who can come first in class, and the other one who can also do well, but he can copy and come first, but can never come first in class. While I'm on the subject of health, Ayushman Bharat, very good. Ayushman Bharat started in 2018 by the Honorable Prime Minister. Bengal Shastro Shati started 2 years earlier by the Honorable Chief Minister of Bengal. That's one difference, 2 years before you. 2, the cards there in Bengal are issued in the name of who? Of the woman in the family, empowering women. And both are 5 lakh. In the state case, state pays 100 lakhs, 100%, and the center pays 40%. The state also has the humility. We also want to see some humility from the central government. Has the humility to say, 3 or 4 months ago,
that, hey, listen, not all of you may have got your cards. So here's a new scheme, door-to-door scheme, Duare Sarkar. We haven't done everything in the last 5 years. We're not perfect, but we will, we can. 2,60,00,000 people have registered and are now getting their cards. Not arrogance, sir, humility. This government, 4, have failed the migrant workers. And during the lockdown, all of us had a lot of chance to do a lot of reading. I read one of the best books I've read on migrant workers. It's from Gujarat. It's from Ahmedabad. The gentleman is a professor of IIM Ahmedabad. His name is Chinmay Tumbe. And there he says, out of every 6 households in India, they have 1 migrant worker. It's a fabulous book. 10 crore migrant workers account for 10% of India's GDP. A lot of good work comes out of professors in Ahmedabad, sir. But what did you do here? 4 hours, no trains. What did you do last week in Bengal? What did you do? 4 hours, chartered plane. Now let me explain the significance of this, because this fact may be lost by so many of you. The Honorable Home Minister was supposed to come to Bengal for a rally. It's a political rally. He needed to stay back in Delhi. Good reason. So what was done? 2.5 or 1.5 MLAs who were switching sides, they were sent a chartered plane and brought there in 4 hours. I wish so much love, affection and care was shown for some of these migrant workers, and we've seen those pictures. And when it comes to migrant workers, and when we ask for data in Lok Sabha and Rajya Sabha, then this government truly becomes the NDA. No data available. You ask them, they'll tell you in Parliament, no data available. 5, this government has failed India's federal structure, which is enshrined in the Constitution. I can give you 20 examples, I'll give you 2, 3. Let's talk about cess. Young people of India need to know, cess, tax when collected by the states, there's a devolution. Given to the center, 40% goes back to the state. That's the devolution. Sharing. What about cess? When government imposes cess that is not shared with the states. Honorable Deputy Chairman, sir, this will interest you even more because you are from my neighboring state, Odisha. So the cess is never given, never shared with the states. This time also you had a cess. Very interesting. Out of all the gross revenue, because the Rashtrapati ji had mentioned in his speech about federalism, out of all the gross revenue, in 1980, 2% was cess. 2% was cess. Now what is cess? Cess is almost 16% is being collected as cess. Every state government must be aware of this. From 2%, 16% as cess. Every time you collect a cess, you deprive the states. And these days nobody talks also about the price of Brent crude, which is now down to 20, 22 rupees, and you get that tailwind of the government. But my colleague is speaking on the budget, he'll give you more on that. So the devolution is also interesting. 42% of devolution. And where is the hocus pocus happening here, sir? On the decrease funding pattern of central schemes. First it was 60% center, 40% state. Or 50% center, 50% state. Now you see the schemes. No more, look carefully. 75% state, 25% center. This is an assault on federalism.
This government has failed federalism, and it actually saddens me, because today the Home Minister was the Home Minister of a state, the Prime Minister was the Chief Minister of a state. So these are actually children of the federal structure. MP-led funds. The Prime Minister will be here. I can't put a tube well up now. Yes, the 8,000 crores were needed. Find a way to allow the MPs, Lok Sabha, Rajya Sabha, to that freedom, small freedom, 5 crores of rupees. Again, the assault on federalism. All hocus pocus. There's no railway budget. I should love speaking on the railway budget. Now listen to the railway, how they have failed federalism. Till 2015, every railway project was 100% done by the center. Post this new last few years, now what has happened? There's a new mechanism in place called the SPV, Special Purpose Vehicle. What's the deal there? The state has to pay 50%, the railways have to pay 50%. Why? Then you say you don't do politics. There's the pink book of the railways which still hasn't been tabled. I hope they table it today, which gives you the state expenditure. Last year you shelved 31 projects of Bengal, all started by Mamata Banerjee. Now suddenly it's winter, or maybe some other reason, I don't know. You suddenly said you're giving Bengal some more money this year. Kya ho raha hai kuch April, May mahina mein? Look at the total which was supposed to be given to a state and how much of that has been given. Infrastructure. Look at the budget papers. 1 lakh crore on infrastructure, that's it. Now you come and announce pre-election 625 kilometers for a road. Dekh lo. Number 1 in infrastructure roads is Bengal. 89,000 kilometers of roads. And I'm only giving you Bengal examples. I'm sure Kerala will have examples, Maharashtra will have examples. So someone said, why were we not in the president's address? These are the issues which the president couldn't address, and we understand that. And we have full respect why this is the way it's done. You have failed India's youth. I don't want to repeat some of the points because Digvijay ji had the same point as I am. Happy to acknowledge that he covered this really well with jobs, youth. 1 crore jobs were lost in India. Some say 1.5 crores. Bengal reduced unemployment by 40% during the pandemic. Not Trinamool Congress figures, not Bengal government figures, these are Government of India figures. What about Manrega? Sometimes we have to remind them. Gadde Khorne ka scheme. Gadde Khorne ka scheme. Ye kaun bola tha? Kisne bola? The former Chief Minister of Gujarat said this on the 27th of February 2015. Now that same Manrega, by the way, I don't mean to keep talking about Bengal, but what can I do? Bengal is number 1 in Manrega. I'm happy I'm going to say it. Now what has happened? Now Manrega. There are still issues of late payment of wages. There's still insufficient budget allocation, still low wages, but now Manrega. Good. 7. This government has failed India's women. This government has failed India's children. Not empty rhetoric. National neonatal mortality rate, national average 22%. Gujarat 21%. Bengal 15.5%. The lower the figure, the better. Infant mortality rate 28% national average,
31% Gujarat, 22% Bengal. Under 5 mortality rate, national average 34%, Gujarat 37%, Bengal 25%. Don't sell us this fake Gujarat model. You can go through all parameters. It's a total fake Gujarat model. Textbook distribution. Number 1, 99.7%, Bengal. Maharashtra, Sanjay Khan, 81%. Women. This is not flowery stuff which will make the 9 o'clock headlines, but these are the hard numbers which this country needs to know. I'm not speaking in Bengali today. Why? Most people in Bengal already know these numbers. That's why it will happen again in April and May. 3. Increase in crime against women. On the floor of Parliament. National average 20%. These are 18-19 figures. Bihar plus 21%. Rajasthan plus 33% crime against women. UP plus 56%. Haryana plus 64%. Who is ruling these states? The only woman chief minister in India, her state, no plus, minus 21%. Bengal, Mamata Banerjee. And the people of Bengal. Sir, I will now speak on one more subject close to your heart. Women's Reservation Bill. Prime Minister is coming on Monday. Bring the Women's Reservation Bill. Don't table it in Lok Sabha because again it will get lapsed. Bring it. Trinamool Congress don't need the Women's Reservation Bill. Guess why? World average in parliaments for MPs is 25%, world average, international. National average is 13%. BJP is about 10 or 11%. By the way, this is not for giving tickets to women. This is elected women MPs. Trinamool Congress, close to 40% MPs are elected. 41% in Lok Sabha, 31% in Rajya Sabha. Big bhashan, you know, some catchy phrase. As we say, Aage Dilli Shamla, Tarpor Bhabish Bangla. Arekbar boli. Aage Dilli Shamla, Tarpor Bhabish Bangla. Everything I say in Bengali doesn't need to be translated. But it's basically, Ram Gopalji, I think I'll make it nicely in English and then tell you. Okay, because the Bengali is too good. It basically means first take care of Delhi, then think about Bengal. This government has failed the economy even before the pandemic. Don't make the pandemic the excuse. Don't make the pandemic the excuse. You forgot. Who got up and said, and my Hindi is not good, nor can I read from a teleprompter, so I'll just paraphrase it. Huh? Give me 50 days and then do whatever you want to me. He said it. And what did she say? What did she say? Within 2 hours of the demonetization announcement, it's on record. Withdraw this draconian decision. She, with the chappals, said this. Demonetization failed every single objective, every single one. Black money, demonetized currency. I have a lovely figure here. Lovely figure. Fake currency, 9 crores. All states, they got fake currency. And we keep saying, Gujarat is never number 1. This is Gujarat was number 1. And I have a lot of friends in Gujarat because Dinesh Da makes the best dhoklas also. They are also from Gujarat. So we have a lot of respect, love and respect for the people of Gujarat. But this is the reality. Some newbie came
and told us about Jammu and Kashmir. I wish him well. After demonetization, terrorism was supposed to stop. These are the numbers. Government of India, 2016, 322. 2017, 342. 2018, 614. What did you tell us? And it's interesting, I remember that. Just after that, Mamtadi came to Delhi and she said, we'll walk to Rashtrapati Bhavan and go and submit a memorandum. And I'm saying this with all respect to all the opposition parties here. So then I told her, some of us told her, I said, Didi, but nobody's walking with us. Only 2 parties have agreed. Which 2? So I said, we said Umar Abdullah is coming down from Kashmir, National Conference, and Shiv Sena. So that was the combination who walked from here to Rashtrapati Bhavan for demonetization. And after that, everyone in the opposition joined. This is not about one-upmanship, but this is what it is. Sir, this government, number 9, have failed to protect and to safeguard the legacy of India's jewels. I'll break away now, sir. This is the 100th year of Satyajit Ray. And based on a story of Munshi Premchand, he made a fabulous film, his first film in Hindi, Shatranj Ki Khiladi. You've seen it, sir? But do watch it. I don't know whether it's on Netflix, but you must watch it. It tells the story of 2 noblemen, completely, 2 of these noble characters, completely engrossed in a game of chess. While their entire state is in ruin, people are angry, people are upset, people are committing suicide, but they are engrossed in this game of chess. And sir, I may be a little biased because I'm from Bengal. So many people believe that Satyajit Ray, in fact, this film was made, I think, in the 70s, but he was a visionary. He was a visionary, sir. Because a lot of buying and selling is happening, sir. The 23 PSUs are being sold. 28 PSUs are being sold. We are selling the nation's gems. But the buying and the selling is happening, sir. We are seeing it everywhere. MPs? MLAs? These public sector's undertakings are what, sir? Job creation, social welfare, overall economic growth. You're selling the family jewels. 74% in FDI insurance. Sometimes I don't get too surprised when the 2 people who spoke this side were once this side also. So they've gone now this side. 74% in insurance, All India Trinamool Congress have opposed from day one. We've opposed this from day one. But then often it becomes the stand you take depends on where you sit. The same with GST. You look at the track record of GST, the Chief Minister of Gujarat. We are all for GST and we warned you that don't rush the implementation of GST. Sir, what have we done so far? We've done so far, you failed to uphold the sanctity of Parliament, they failed India's farmers, they failed India's COVID prep, they failed to strengthen the federal structure, they failed India's youth, they failed India's women, they failed India's jobs, they failed India's economy, they failed to protect the legacy of those jewels. They've also failed the Indian media.
Here I want to salute the frontline workers, the young boys and girls who are reporters, who do not belong to any big corporate media house, who are still fighting their battles. You can intimidate or threaten the media barons. You cannot intimidate and threaten these young boys and girls. And from Parliament, we want to tell you, we will do all it takes in all humility to be with you in these difficult times. Then Bark is another story. How the ratings? Time today is short, but that's another story. Who's telling what, how, where? And when it comes to all this, you know, we keep having debates. Fake news. Who do you blame for fake news? This IT cell or BJP? No! Why are you blaming all the wrong people? Blame the person who is responsible for it. Listen to this, sir, please. 2018, translation in English, said in Hindi, I've got the video. 2018, and I'm saying it in English, quote, "We are capable of delivering any message we want to the public, whether sweet or sour, true or fake. We can do this because we have 32 lakh people in our WhatsApp groups." Akhilesh Yadav slapped Mulayam ji. Ye to fake news hai, no problem. Unquote. Who said this? This is no IT troll. I was hoping it'd be here. Because I'm with Mamtadi's party. What we say, eye to eye, straight to your face. Amit Shah ji said this at a rally in Rajasthan. Sach ka jhoot aur jhoot ka sach. Sir, you have failed the people of India. Different groups of people. I've got 6 minutes to go, sir. Citizenship Amendment Act. I've got all the footage from here. 19 lakh Bengali Hindus. Repeat, 19 lakh Bengali Hindus in detention camps. Now you're taking 1.5 years and promising Mathuas in Bengal citizenship. Baba, they are already citizens of Bengal. They are already citizens. I'll tell you why. How can you be an MLA elected if you're not a citizen? How can you be a minister in Bengal if you're not elected, you're already a citizen? How can you be a BJP MP already elected if you're not an Indian citizen? Who are you trying to fool? You failed the citizens. Scheduled caste, scheduled tribe, 7% increase since 2018. Uttar Pradesh increased 25%. Bihar increased 14%. Bengal on the floor of parliament, I tell you, 0.3%. Crimes against scheduled caste, first one was caste, this is tribes. Crimes against scheduled tribes, 26% increase in 2018, 26%. Madhya Pradesh, 23%. Rajasthan, 21%. Bengal, 1%. Those were the points, sir. Now in conclusion, must thank the President, Rashtrapati ji. He quoted the elder brother of Rabindranath Tagore, and appropriate, and he quoted it perfectly. The finance minister, I must thank her. She quoted Rabindranath Tagore, and she quoted it perfectly. We're very happy. It's another matter what the party people from here are going and saying there. They're changing the birthplace of Rabindranath Tagore, they're saying he's born in Shanti Niketan. This is not some small party worker. This is one of the two big boys. You know who I'm referring to, sir? Yes. Then Birsa Munda statue, they go garland it, then they, oh, yeah, Birsa Munda statue nahi hai. It's a wrong statue. Netaji, you know. And somebody today was
one of the speakers from Bengal, he's the nominated MP, but and also the other speaker, they are invoking Sardar Patel. And they want us to invoke history. If I start invoking history today, I did a lot of quiz in the past, before I became an elected Trinamool MP. Today is February the 4th. History. On February the 4th, 1948, Sardar Patel banned the RSS. This is not non-parliamentary. Now you make a statue. Good. So don't ask us to invoke history, because we have a lot of history to invoke. But now let's come back to Tagore, Rabindranath. Sir, 5 minutes, I'm finishing up, sir. So I also have a Rabindranath story from school, if you allow me, because I've had a lot of heavy data and sharing, so little school story, little light-hearted. So I was in class 7, and I took part in a fancy dress contest, sir. And the music teacher was one judge, and the Bengali teacher was the other judge. And 44 students in class, and the teachers were there, our Bengali teacher and the music teacher, and hurrah, I won the fancy dress competition. I went dressed as Rabindranath Tagore. Wait, I haven't finished my story. I haven't finished my story. 2 weeks later, I got my Bengali literature paper results. The same judge who was there. And then she called me, the same lady who gave me first with the music teacher. She came and gave me, I looked at Bengali literature paper. I got 14 on 50. I said, ma'am, what happened? She said, Nana, that was the fancy dress. This is the real thing. These school stories, sir, are very beautiful stories. Make me feel so nostalgic. Don't they, sir? Sir, Tagore had an outlook which was Vishwa Bangla. Means Bengal is global. That was his outlook. In many ways. He had fabulous stuff on humanism, humanity. I'm not going there, but on Vishwa Bangla. And that is what the Bengal government is trying to do in the last 10 years, because this debate otherwise is, in Bengal, you be Agarwal, you be Sharma, you be Chatterjee, you be D'Souza, you come to Bengal. You're working in Bengal, you're living in Bengal, you speak broken Bengali, all is good. You're a part of the global thing. But what we mean by outsider is don't come as a tourist gang 3-4 months before the... That's all. Sir, I'm finishing. Finish with 2 quotes, sir. I'm going to read a quote in the spirit of Vishwa Bangla by Tagore. মিথ্যে কথার ফুলঝুরিতে চেষ্টা করছো নামাতে আর ছুড়ে দিতে আবর্জনায় কিন্তু জেনে উঠবো জেগে ধুলো থেকে স্বমহিমায়. This is for our farmers. And the beauty of Tagore, the lines are in Bengali, but they were not written by Rabindranath Tagore. That's the Bengali global. These lines are written by Maya Angelou, the famous and contemporary American poet. We translated in Bengali, now in English for our farmers. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may tread me in the very dust, but still like dust I shall rise. I want to tell Harbhagavan Singh, who didn't understand the English translation of Maya Angelou or the Bengali. I want to tell the farmers I met, who Mamatadi sent me there to meet, along with my colleagues from Hoshiarpur, from Amritsar, Gurpal Singh ji from Hoshiarpur, sun rahe ho na? And the farmers from Taran Sahib, and to every farmer of this country, ye aapki rozi roti ki baat hai. Hum sab aapke saath hai. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind, Jai Bangla. Thank you, Honourable Member. Honourable Member Shri N.R. Elango.
Honorable Member Shri N.R. Elango. Chairman, I thank you for the opportunity. You have 6 minutes left from your previous speaker. Honorable Chairman, this is my maiden speech, so please consider that. Maiden speech. I thank you for the opportunity given to me to address this House. I thank my leader, through M.K. Stalin, for having proposed and made me a member of this House. I thank my party and its leaders for having wholeheartedly seconding the proposal. Belonging to the Dravidian culture. Member, just for your information, the maiden speech you can take up in a subsequent one when you're speaking on a specific bill. This one will have I'll try to complete. Thank you. Belonging to the Dravidian culture, I would like to express my gratitude to the leaders who have shaped and influenced the Dravidian ideology. Dr. C. Nadeshnar, Panagal Raja Sir Rama Rai Nangavaru, Sir P.T. Tyagaraya, Sir A.T. Pannirselvam, Sir T.M. Nair, Tandai Periyar, Perariஞர் Anna, Tamizhana Thalavar Dr. Kalaignar, and Yenamana Perasiriyar Anbazhagnar. But for those great leaders, people like me would have remained uneducated, leave alone coming to this august House. Sir, my leader asked me to explain to this great House the plight of Tamils and represent the cause of Tamil Nadu. And for that, just to re-emphasize what Ariஞர் Anna spoke in this House. I recall the words of Perariஞர் Anna on the floor of this House on 25th January 1963. I quote, "Sovereignty does not reside entirely in one particular place. We are having a federal structure. That's why the framers of the Constitution wanted a federal structure and not a unitary structure. Because as many political philosophers have pointed out, India is so vast. In fact, it has been described as a subcontinent. So vast, the mental health is so varied, the traditions are so different, the history is so varied, that there cannot be any steel frame unitary structure here." Sir, I thank the Excellency the President for having informed that there are now 562 medical colleges in our country and 50,000 PG and UG seats are increased in those medical institutions. Sir, because of this increase, then there is no need for the All India quota in the state government hospitals. So I request this government to surrender all the All India quota seats from the next academic year to the relevant state governments and the colleges. Sir, after seeing the protest of the farmers and after hearing that about 160 to 190 farmers died, I came with a very fond hope that this government will withdraw the agriculture bills. But that was not happening. And it was made clear that they are not going to do that. Let's keep silence, please. In the President's address, it was stated that 1 lakh crore has been allotted to the Agricultural Infrastructure Fund. It is stated that about 100 Kisan rails were being introduced. Sir, but in the budget speech, it is stated at page 9, paragraph 47, warehousing assets such as CPSEs, Central Warehousing Corporation and NAFAD, among others, will be monetized. The presidential address speaks about 100 Kisan rails. The budget speech says railways will monetize dedicated freight corridor assets for operation and maintenance after commencement. On the one hand, you are saying that we are spending crores and crores of rupees of the taxpayers' money for the development of the country. On the other hand, you are selling all those assets. So this is a kind of using the powers for an alien purpose. So the 3 farm laws which are now introduced and passed, all these 3 farms are necessarily occupying the field of the state's power. There was no need for the center to legislate in such a tearing hurry, exceeding its legislative competency in a matter entrusted exclusively to the state. Further, though the legislations were enacted under the guise of alleged reforms for the farmers,
their interests were not even considered. Sir, in the state list, entries 14, 28, 30, 45, 46, 47, and 48 completely occupy the field of agriculture. The union government exceeded its legislative competency and passed those agricultural bills. Sir, this is against federalism. Sir, after 30 years of Aringer Anna's speech in this Honorable House, in this August House, Honorable Supreme Court of India in S.R. Bommai's case said, federalism is the basic structure of our constitution. That has been now flouted. Sir, on 13th September 1970, our former CM of Tamil Nadu, Muthamizhar Aringer Dr. Kalaignar, spoke about the importance of state autonomy. He demanded greater powers of states politically, administratively, and fiscally. Sir, in 2008, our leader, Mr. M.K. Stalin, wrote a letter to the Honorable Prime Minister and 10 other Honorable Chief Ministers. In that, he was highlighting the state's autonomy. So the farm laws are paving way for a cattle formation. It gives a chance to the sponsor to create encumbrance over the crops without knowledge of the farmers. The subdivisional authority is given a power to decide the dispute between the farmer and sponsor. There is no clarity what kind of procedure he is going to adopt, whether the procedures of Evidence Act will apply or not, it is not known. The Essential Commodities Amendment Act, in fact, runs contrary to the main act and its objectives. And in short, all these laws are going to create a black marketing regime. Sir, one important question need to be answered. What kind of country are we? What kind of nation are we going to be? Our actions today determine the country of tomorrow and forge the thoughts of the leaders of tomorrow. Today we are at a crossroads where we must draw upon our inner strength and the idea of India we grew up, where there is harmony, love, and find the resolve to not to yield forces of destruction. While we do so, it is important to remind ourselves the principles of secularism. All of us should join together to fight hatred and divisive forces. There is an idea of India that our constitution makers had in their mind. It was one of appreciation of different cultures, religions, languages, not merely of the tolerance. It is such country that I want my children to inherit. Sir, 2 minutes, I'll finish. Sir, of late we are seeing Honorable Prime Minister and the ministers are quoting Tamil poets. Maybe because of the elections in Tamil Nadu are forthcoming. Anyhow, we thank them. But one Tirukural, which they forgot to consider. In Hindi, we are all calling the farmers as Annadadas. Tirukural said, Uludundu valvare valvar, matrellam, toludundu pinsilbavar. Which means, those who are plowing or living, all others are leading a subservient, dependent life on the farmers. We are passing bills, sir, against the detriment of them. The government have to consider that. Sir, in democracy, numbers play a major role. It is hence believed that the majority can do whatever they want, or they think whatever they do is right. I quote a couplet from Tirukural, Eppurul yarar vai ketpinum, appurul meipurul kanpaderiyu. To discern the truth in everything by whomever spoken is wisdom. So to know the truth, to get the ground reality, you have to hear what the opposition says. You may call us minority and will not hear our voice. What will happen if you continue with this attitude?
The answer by Thiruvalluvar is this. Idipara illa emara mannan, kedupar illanum kedum. Which means a king without trenchant counsel will fail on his own. So, sir, therefore I request the government to withdraw the formulas, to surrender all the seats in medical education to the respective state governments, and to uphold the federalism. Thank you. Thank you, Ilangonji. Now, Dr. Bandaprakash. Bandaprakash? Oh, he is not there. Bandaprakash, you have left with only 2 minutes, but try to conclude as much as. Chairman gave some time when we talk is on record, saying that we'll give 2 minutes more. Because I was taking much time. I know. Thank you, respected Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity for speaking on thanks motion, sir. Sir, our Honorable President of India, that is said that the vaccine program, we are proud to be, we are indigenously producing the vaccine. Sir, Hyderabad is a very big vaccine center. It is a vaccine capital also. They are maximum manufacturing over 6 billion doses annually and contribute to the about 1/3 of global vaccine production, sir. That's why our Honorable Minister K.T. Ramarao is requested the Union Health Minister to set up a vaccine testing and certification laboratory and a government medical store depot in Hyderabad, sir. The Honorable Vice President of India, Chairman of our House, Sri Venkaiah Naidu Garu, also advised the Government of India to consider the request of the set up a vaccine testing and certification lab in Telangana, Hyderabad. Sir, the government also insisting upon Nirbhar Bharat, further strengthen the self-reliant in agriculture. They are also saying the mantra of per drop more crop and completing irrigation projects and do better agriculture practices. I don't want to go into the formulas, only our leader Dr. Keshav already spoken on that subject. Sir, in agriculture sector, our Telangana government doing good initiation to increase the income of the agriculture farmers, sir. As it is, we are giving 24 hours power supply, free power supply, without any interruption, quality power supply to the farmers. And sir, we are also completed our irrigation projects. Almost all 12 old projects completed and 12 redesigned projects works also near completion. We already spent 1 crore 17 lakhs 483 crores on the projects. Alone on Kaleshwaram project we have spent 18,109 crore budget. Sir, we are giving Raitu Bandhu, perhaps is the first state started Raitu Bandhu in the country. After that, so many states also followed and central government also followed the Telangana. Sir, we are giving 5,000 rupees per acre for each crop. We are paying 2 times 10,000 rupees for the farmer as a subsidy input for the farmers. We are also initiated a program that is Raitu Bima. Total 32.73 lakh pattadars families are enrolled with the Raitu Bima program. It is linked up with the LIC of India. Sir, as on today, whoever expired with any cause, accidental or natural death, they will be paid 5 lakh rupees within
5 days. It will be straight transferred to their account, sir. As on today, we have paid 2,206 crores to the beneficiaries. Sir, for restoring the minor irrigation tracts and lakes in Telangana state, our government taken a task of regenerating tanks, storing 265 TMC water across the state in 5 years, sir. The income was increased by 78.50% in the tanks oicut, sir. Sir, apart from that, in the industrial sector also, our government taking several steps to develop the industrial sector, particularly TS IPAS that was initiated by the government of Telangana, almost more than 14 lakhs 50,000 employment created. Number of the companies also established their establishment Hyderabad. Sir, Honorable President also mentioned about the mega textile parks. Perhaps this is the first state in India who has initiated textile park concept, that is Kakatiya Textile Park at Warangal with 2,000 acres. We have initiated, sir. Already 300 crores budget also it is allotted to take developmental programs. We request the government of India to include our Kakatiya Mega Textile Park into the Mega Textile Park scheme of 7 Mega Textile Parks, sir. Even, sir, our IT sector, IT exports also, there is a tremendous growth, that is 2019-20 over the previous year growth, almost all 8.09% national, more than national average is double the national average. Our growth rate is 17.93%, sir. Sir, the IT department, they have released number of statistics to indicate the growth rate of Telangana IT sector, sir. That's why we have requesting number of times, which was given by the previous government, promised by the previous government, ITIR scheme to provide better scheme to ensure that cities like Hyderabad continue to build on the tremendous momentum in the IT sector growth that has been witnessed over the last 6 years, sir. And such scheme also provide major boost to IT sector as it look up to the government for relief and economic development. Sir, Jal Jeevan Mission, the government also wanted to give tap connection to every house. Har Ghar Ko Jal Ka Pani. Actually, this is initiated first in Telangana in 2016, and the first phase of the program also inaugurated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Now, in Mission Bhagiratha, Telangana is almost all completed. 98.75% of our households of Telangana with tap connections, that is rainwater taken, and it is filtered water monitored by 70 labs in the entire state under the mantra of chemist and microbiologist, sir. Now, we stood on the first in the Mission Bhagiratha. Earlier, Niti Aayog also recommended 19,500 crores for Niti sanction for the Mission Bhagiratha project. But as on today, we have not received any money. Even Mission Kakatiya also, they have recommended 5,000 crores, but we have not taken any money, sir. Sir, lot of appreciations. Always we are getting from the center and other departments, respective departments, but we are not getting any money for the such projects, sir. Sir, particularly the entire country discussing on the particular reforms.
the reforms initiator in 1991, Sri Honorable P.V. Narasimha Rao, the then Prime Minister, he initiated number of reforms in the country. On behalf of our party, we request even our Telangana legislature also unanimously resolved to confer a Bharat Ratna to Sri P.V. Narasimha Rao Garu, sir. And also we request to rename that Hyderabad Central University, Hyderabad, to be named as P.V. Narasimha Rao Central University of Hyderabad. We request the Government of India to name a road in the New Delhi after Sri P.V. Narasimha Rao, sir. Sir, education, the Honorable President said quality education we should provide to the students. Sir, Telangana government, after formation of Telangana, we have started 281 residential schools for OBC students. Now we have 104 for almost 200 colleges for SC students, 250 colleges for tribal students also, sir. The tribal junior colleges in residential area, that is 28 junior colleges, degree colleges also we have started 22. Now we are having Ekalavya model residential schools 23, mini Gurukul schools are 29. Sir, we also earlier, the Government of India, they have sanctioned a National Designing Center at Hyderabad, but after bifurcation of the state, the center has been gone to Vijayawada. Now we request they should sanction a National Institute of Design, National Design Center at Hyderabad, sir. Sir, another request we made, sanction of triple IT at Karimnagar and sanction of Indian Institute of Science, Education and Research to Telangana, sir. Another request we made, establishment of Indian Institute of Management in Telangana state. Sir, according to AP Reorganization Act, there was so many promises made to Telangana state. Out of that, one is tribal university at Telangana, but we have given the land, we have given the minimum facilities, but since last 3 years we are requesting number of times, but they are unable to start tribal university in Telangana. We don't know what are the reasons. Sir, even they have promised for a coach factory under the Act, but as on today we are waiting for the coach factory. They are making promises to other states, other places, wherever they have a problem, but we are demanding number of times, they are not giving any coach factory. Please conclude, Bandaprakashji. I will conclude, sir. I will conclude. Even Bayaram steel plant also they have promised under the AP Reorganization Act, that also as on today they are not even fulfilling their promise, sir. We are also requesting the government, we are expecting so many things in the Honorable Presidency, sir. Thank you. OBC reservations in the legislature. OBC reservations in the legislature, sir. Our state legislature already resolved and sent it to the Government of India, 33% reservations for OBC. Even women reservation in the Assembly and Parliament. Sir, BC ministry in the Government of India first. After 72 years of independence, we don't have any ministry for the backward classes, other backward classes in the country, sir. We are also requesting the government to consider the request, sir. Sir, always in the President's speech also they said that center-state coordination has strengthened the democracy, sir. For strengthen the democracy also, center and state, they should work together and depend on each other in the development process, sir. Thank you very much. Thank you, Bandaprakashji. Now I request Shri Subhash Chandra Bose Pilli. I think he is in the Lok Sabha chamber, yes? Sir, I am in Lok Sabha, sir. Yes, sir. Tomorrow I will speak, sir. Okay, you can
You can start, Mr. Subhash Chandra Bose ji. Tomorrow I will speak, sir. I have given a letter to the Honorable Chairman. Next. Please permit me for speaking tomorrow. Now, Shri Bikas Ranjan. Bikas Ranjan, Lok Sabha Chambers. Yes, I'm in Lok Sabha chamber. Yeah. I really take this opportunity to thank you, sir, Okay. for providing me an opportunity to speak on the address of the President of India. I think the President of India is the head of the state, but his speech really relates to as if he is the head of the government. This speech, therefore, in my humble understanding, relates to the 6 minutes. so-called achievements of the government and at the cost of the democratic principle. I just quote from the Honorable President's speech. He has started his speech quoting from a particular couplet from a well-known poet from Assam, but this has a very dangerous strain. He says that India's grandeur is the ultimate truth. In one single consciousness, one thought, one devotion, one inspiration, let us unite, let us unite. This idea of one consciousness, one thought, one devotion is basically against the spirit of the Indian Constitution and it hits Indian constitutional morality. I'm shocked. But this basic philosophical foundation ultimately led the Honorable President to go ahead with his speech, which is not a complete speech. If I come to paragraph 6 and 7 of his speech, he has not mentioned, and deliberately he was not allowed to mention, the hunger position of our country vis-a-vis the hunger index. We are at the very below, at the level which is very alarming level. People in our country is getting not proper food. Even the latest survey report made by Ahuja University, they say that the people are suffering from lack of nutrition. The women and the children are suffering from lack of nutrition, but there has been tall claim about the so-called Garib programs. Now, I find that somebody who stands on behalf of the government speaks high of corona fight. I accuse this government for not taking appropriate steps at the appropriate time to appease some personalities and thereby caused much harm to our society. In the month of December, there was alarming indication of the spread of the coronavirus, but the government of India did not take any preventive measure, any step to ensure that the spread is not done and allow the foreigners to come into our country and check them at the airport. But sudden declaration of lockdown with just 4 hours notice, it has been mentioned by many speakers before me, which has caused tremendous difficulty. The lakhs and lakhs of the workers of the country, they have started working. I find this particular thing, which ought to have been mentioned in the speech of the Honorable President, is missing. Therefore, the President was not allowed to speak on the real sufferings of the people of our country. It has ought to have been mentioned what was the amount of sufferings. It has been described in detail. Everybody knows from the newspaper. I'm not going to give the statistical view. But that had caused tremendous amount of spread. This is no good saying that we could only check the death to the extent of 1 million. That's not an issue. There are other countries, neighboring countries, we take lesson from them. We have seen how they have been able to control the death in their own country by taking appropriate measures at appropriate time. Here, this mentioning is absent, which shows that the President was not really concerned about the plight of the Indian people. Sir, another important aspect which has been discussed by many about the peasants' struggle. I'm sorry to say, in the speech of the Honorable President, there has been no mention. What he has mentioned is very unfortunate. He says that we respect peaceful movement and the
condemns the 26th January's incident. May I just read this? This is very, very important. In paragraph 25 and before 24, it is said, after extensive consultation, the Parliament approved 3 important farm reform bills. Sir, a fundamental question, had there been extensive discussion, why the question of taking the ordinance route? Ordinance is ordinarily promulgated when there is an emergency, an extreme urgent situation, then the ordinance is taken recourse to. Had there been so much of discussion, which the government is claiming, the simple answer is not coming. Why did you then go for ordinance? You could have then straightway gone for enactment through the parliamentary discussion. You brought it in the parliament only to get approval of the ordinance. And how we have discussed, one of my fellow members have described, I am not going to waste my time on that. And this caused tremendous amount of dissension amongst the peasants as a whole. This is not a case of Punjab and Haryana. It's no good of citing the example of Punjab or Haryana. Go down the states, go down the villages of every state, everywhere there is demonstration, everywhere the peasants are very much aggrieved by this act. Now someone was telling me peasants are not that much of educated. I really feel to say the education doesn't mean having acquired a university degree. Education means the education learned from the real life experience. The peasants know where their shoe pinches and they are united. What is their demand? Why can't the government accept this demand? Repeal and re-enact. There is no legislative difficulty. Repealing this act, you can bring that on table and re-enact it. What they want? They want MSP, guaranteed for all. And they also want secured procurement. It's the basic duty of the government to procure for our food safety. We are talking of having huge production made by the peasants that they could do in absence of this amendment of laws. Therefore, they were very much keen to produce, and for the purpose of marketing, it is the duty of the government. Peasants cannot be made to be traders. If you want peasants to be traders, then you are really committing a suicide, and which path you have taken. This is very unfortunate. I find there are many instances of statistics. Statistics, as I say, is a great lie. Statistical data sometimes does not reflect the real situation. So for the MSME is concerned, MSME's allocation, I find it has been really very meager allocation. The amount of 3,000 crore, as you say, vis-a-vis 6.5 crore MSMEs. Therefore, your allocation is absolutely not meeting the need of the people and the MSMEs, which is one of the big producer of employment. This has not been done. Now, you have seen that under Deen Dayal Antyodaya Yojana, Rashtriya Gramin Ajivika Mission, more than 7 crore women entrepreneurs have become a part of the network of nearly 66 lakh self-help groups. These women groups have been provided bank loans worth rupees 3,40,000 crores in last 6 years. If you say for last 6 years, in 1 year you have come and the 7 crore women, how much does they get? Therefore, this statistic really does not reflect the realities of life. We have seen the Honorable President has mentioned that the present struggle is going on. No, he did not. He unfortunately avoided that. And the language he said that we respect. This is the constitutional mandate. The government cannot give us some concession by saying we respect. You have to respect. You have to carry forward the constitutional obligations. And Constitution gives us right to freedom of expression. It is expected that we abide by the laws and rules with equal sincerity. This equal sincerity should come more from the government. Because please conclude. Conclude, please. How much time was there? So you have taken 8 minutes. Your time is only 6 minutes, actually. Sorry, I was never told 8 minutes. Anyway, I will conclude. I would conclude with, it doesn't matter whether it may or not, I would conclude, let the government and the ruling dispensation, sometimes they talk of Rabindranath Tagore. I conclude with a particular poem from Gitanjali, which has gained acclamation from the whole world. May I read this? What the India was thought of and how the India should be built up, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free
where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic worlds. I repeat, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic worlds, where words come out from the depth of the truth. Mere words would not do. Where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary, treasured sand of dead habit. We are talking Ram Mandir will give us unity. These are all really talking of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought of action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Let us enjoy that freedom where somebody will not be arrested because of speaking against the government, where the intellectuals should not be described as urban Nakshals and put them behind the bar. Let us think of that. Let us think of the federalism, the foundation of which is diversity in unity and unity and diversity. You do not think that everything should be done by you and every credit should be claimed by you. This is done by the people as a whole of the country. Try to respect them and give respect to them. Withdraw your farm laws, sit with them. You cannot invite them for a negotiation by putting the concrete walls, by stopping their approach to the city. This is not the way a democratic government does it. Therefore, I would appeal through you, sir, that this statement of the Honorable President does not reflect the Indian realities. Therefore, I cannot support this. Thank you. Thank you. Thank you, Vikas ji. Now I request Sri Sanjay Singh. धन्यवाद मानवर, आपने इस अति गंभीर विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको शूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मान्यवर। इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है मान्यवर। 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंघू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने,
अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। यह हो रहा है मान्यवर। आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। यह आप करा रहे हैं, यह आप करा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। हर तरफ जुल्म, हर तरफ एफआईआर, हर तरफ मुकदमे। जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा। एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या यह नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों। वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। मैं यहां सुन रहा था मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जितने भी नेता बोल रहे थे, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था। यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद ये बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। और कांग्रेस ने अगर 19 के घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था तो उनको तो 55 पे पहुंचा दिया, आपने तो लागू कर दिया। आपको 5 पे पहुंचा देगी, इस देश की जनता 5 पे पहुंचा देगी। इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए। अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए। कांग्रेस ए हो जाए, कांग्रेस बी हो जाए, जनता प्रचार करे। आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी। मान्यवर, इस बिल में क्या क्या लिखा है वो बातें आपको बता के और थोड़ी बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। असीमित भंडारण की छूट दी गई है इन बिलों में, और वो क्यों दी गई है? 2 साल से अडानी का 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी। लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई। तो यह बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया, अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए यह सरकार यह काला कानून लेकर आई है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है, उन्हीं के लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून। यह सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है मान्यवर,
ये सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये उनके लिए बनाई गई है। मान्यवर, इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कि किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं सदन के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी, देती रहेगी। और आपने हमसे 9 स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए, केजरीवाल जी ने इनकार किया। हम वहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं, आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं। हम वहां शौचालय का इंतजाम कर रहे हैं, आप वहां शौचालय का इंतजाम रोक रहे हैं। आप वहां पर लोगों को पानी, खाना, शौचालय, इस तक पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इंटरनेट, वो दुश्मन देश के नागरिक हैं क्या? उनके साथ इस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला मान्यवर, तिरंगा रैली लेके निकला, और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, आज वो दीप सिद्धू संजय जी कंक्लूड कीजिए। सर, सबको समय मिला, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। सबको समय दिया, मुझे भी समय दीजिए। नो 10 मिनट दे सर, 10 मिनट दिया मैं। मान्यवर, दीप सिद्धू भाजपा का नेता वो फरार है जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया। अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है ये जो सामने आया है। आप एमएसपी देने की बात कहते हैं, आप कहते हैं हम इस देश के किसान को एमएसपी देंगे। बड़ी अजीब बात है मान्यवर, इस देश के किसान को एमएसपी देने के नाम पर क्या कर रहे हैं ये? मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूं। 10 धान के क्रय केंद्रों पर 10 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई क्योंकि क्रय केंद्र में खरीद में एमएसपी में गड़बड़ी की गई। इसी तरीके से 1 रुपए किलो गोभी बिक रही थी तो किसान ने अपनी गोभी पे ट्रैक्टर चला दिया। उत्तर प्रदेश की खबर। बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ की धान खरीद हो गई कागजों पे, किसान का पता तक नहीं है। तो डेरेक ओब्रायन साहब, जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं, नाम दर्ज करके खरीद हो गई। 4 साल में गन्ना किसानों पे मात्र 10 रुपए इन्होंने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, मात्र 10 रुपए मान्यवर। तो इसलिए ना आप एमएसपी देना चाहते हो, ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो। असीमित भंडारण की छूट देकर आपने पूंजीपति मित्रों को यह सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे, सस्ते में किसान से फल खरीदेंगे, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदेंगे, उसका बड़े बड़े स्टोरेज में भंडारण करेंगे, जमाखोरी करेंगे, और जब बाजार में फल सब्जियों की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, तो महंगे दामों में जनता को बेचेंगे। यानी आपने महंगाई को, जमाखोरी को, कालाबाजारी को इस बिल के माध्यम से लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है, उसका रास्ता आपने खोला है। इसलिए भी ये बिल, तीनों का तीनों काला बिल वापस लिया जाना चाहिए। थैंक यू। अंत में बजट आपने पेश किया। मनोहर, बस खत्म करके अपनी बात को खत्म करूंगा, उन्हीं बातों को। प्लीज कंक्लूड। सर, बजट इन्होंने पेश किया है, तो बजट के ऊपर और खरीद के ऊपर मैं लास्ट मिनट जो इनका बजट है, चंद लाइनों में उसको कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे,
चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। धन्यवाद माननीय। Thank you, Sanjay Singh ji. Now, I call Mr. M.V. Strains Kumar. Thank you very much for giving me an opportunity to speak on this occasion. So the paragraph 25 of the President's speech says the government holds in high esteem the values of democracy and sanctity of Constitution, and the government has always respected freedom of expression and holding of peaceful agitation. So in 2020, World Press Freedom Index, India is ranked abysmally low at 142 out of 180 countries. Even the military junta Myanmar is ranked above India at 139. Palestine is 137. Monarchy countries like Oman and UAE are ranked at 135 and 131, respectively. It's a shame for the government that no democracy is ranked as below as India at 142. Rashtrapati can see how democracy is butchered just a few kilometers away from Rashtrapati Bhavan, Singur border, sir. Our Annadatas, the Kisans, on whom the Rashtrapati showers praise in his speech, they are silenced and traumatized and with multi-layered barricading, iron nail rods, barbed wires and iron rods between cemented barricade, remaining one of the horrific Tiananmen Square incidents. Now, of the Constitution values are upheld by his dispensation. Rashtrapati in his paragraph 26 denounces farmers' protests as disrespect to constitutional values. So it is the BJP government which dishonored the nation monument, Red Fort, by handing over to a private entity for 5 years for 25 crores. Sir, let me remind you, the Article 51A says that there's a fundamental duty of every citizen to value and preserve the rich heritage of composite culture. They have privatized the fundamental duty of handing it over to a private group and enabling these branding opportunities. They do not know the difference between a national monument and a commercial property, sir. However, when some hooligans enter the Red Fort, it's an unfortunate incident, the dispensation first allowed them to enter and create mayhem, only to raise the jingoistic furor later, sir. And farmers are called anti-nationals. Unfortunately, the President has not seen the suffering of his fellow brethren, the Kisan, the Annadatas, who are protesting just a few kilometers away from Rashtrapati Bhavan. They are today insulted by the BJP dispensation by terming them as anti-nationals, sir. Internet is banned at the site of farmers' strike. This is draconian and unheard of in democratic setup, sir. Several international personalities have started raising voices against this. Preamble of the Constitution reads, sovereign, socialist, secular, democratic republic. Parliament is no longer sovereign, sir. Bills are passed for private ends. There is no socialism. In the name of free market economy, government is selling all its assets, even LIC is privatized. Disinvestment of all government run PSUs and banks. Country is being mortgaged into private entities, sir. Republic is a misnomer. Rashtrapati speaks a lot about Atmanirbhar Bharat. There is nothing but a catchy slogan aimed at hoodwinking the citizen. Sir, even toys worth 80% of the toys sold in India, worth 4,000 crores is being imported, sir. We don't even make those, and we are saying Atmanirbhar Bharat. I think it's time that Atma Vichar is done on the slogan of Atmanirbhar Bharat, sir. Let this government know that roti cannot be downloaded from Google. It's the farmers who feed us. The rich gets richer and the poor gets poorer. So I would like to end my speech with a famous quote from Nigerian poet, Nobel laureate Soyinka. The greatest threat to freedom is the absence of criticism. With this, I stand to oppose the motion of thanks on the President's address, sir. Thank you. Thank you. Sri K. Valvena. Venvelena. Gallery 3. Gallery 3. Please speak. Yeah, thank you so much, Honorable Deputy Chairman, for giving me an opportunity to deliver the motion of thanks to Honorable President's speech. Honorable Deputy Chairman, first of all, I want to emphasize
the Honorable President's speech, serial number 72, which indicates the Union government policy for rapid development of the Northeast. Yeah, our Honorable President pointed out about the construction of road in the Northeast, especially in the state of Assam, like riverway and along the construction of road along the Brahmaputra River. So, Honorable Deputy Chairman, I would like to point it out, in addition to this, Modi's government have done so many things in our state, that is Mizoram, in the field of road construction. The Modi's government has taken so many steps for the construction of road that will be very helpful to implement Act East policy, such as construction of four-lane road from Silchar to Aizawl, about to start. So it is the government of India is preparing to hold a tender from Silchar to Aizawl four-lane road, and construction of two-lane road from Aizawl to Champhai have been started this year, which will connect Indo-Myanmar Border Trade Center at Zhoukhothar. I hope we all know this Border Trade Center have been started some years back, but due to the coronavirus pandemic, this Border Trade Center have been closed maybe about 10 or 11 months. So this construction of two-lane road will connect this Border Trade Center near the Myanmar boundary, and construction of two-lane road from Seling to Tuipang. This Tuipang is the southernmost, one of the southernmost villages in the Myanmar border also constructing. And long drive to Paletua, Myanmar Seaport Road, construction of two-lane had been started. So this long drive to Paletua road will connect the road up to Bay of Bengal within Myanmar. So this road will be very helpful for the people of Mizoram, not only for the people of Mizoram, but also for the whole people of the Northeast. And Lunglei to Tlabung, Indo-Bangla border trade road is ready for calling tender this month. So central government is ready to call tender for this construction of Lunglei to Tlabung road. Tlabung is situated at the boundary of Bangladesh, in the bank of the Khothang Tuipi River. So the Honorable Prime Minister Modi's government is preparing to establish new border trade center here. The name of that village is Korpuichua, which is the river bank of Khothang Tuipi. So up to this village, the Union government is preparing to construct new road from Lunglei town to up to this Korpuichua. So those constructing road will be very helpful for the state of Mizoram. And Tripura to Aizawl National Highway. National Highway 44A, the whole lane is also under construction. So I express my heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister Modi's government for doing all this work in our state. In the meantime, Honorable Deputy Speaker, I would like to express my hope
for the construction of Indo-Bangla border road along the border fencing line, because many BSF border outposts and the surrounding villages have no road connectivity. Yeah, I have visited this border place just before I come down here for this session. I have discovered some villages have been put outside border fencing, and about 10 border outposts have no road connectivity from any part of India. It is situated just like an island. So, in addition to this, I would like to mention it will be very important to establish a new border road along the border fencing, which will connect some villages, and that will also connect some border outposts of the BSF. Secondly, Honorable Deputy Chairman, I would like to express the Honorable President address, serial number 3, 5, and 6, that how Modi's government encountered the multiple problems during the time of COVID-19 pandemic. I hope we all know Indo-China border problem, Indo-Pakistan border problem, major cyclone in several states, earthquakes, floods, locust attack, bird flu, coronavirus. All those different problems prevailed Modi's government last year. We all know. I hope we all know it. We all know what happened at Indo-China border last year. Standoff was a popular word throughout the country. The fear of China remains in the hearts of some people since Chinese aggression of Arunachal in 1962 to till 2020. However, I would like to emphasize the Honorable Modi's government completely changed the mindset of those people who fear the Chinese army, who fear the Chinese invasion. Modi's government have been completely changed the mindset of those people so that they could possess unwavering faith upon our armed forces. In the meantime, simultaneous challenge came to us of saving lives. Please conclude now. Time is. Please. Yeah. Conclude. In the meantime, simultaneous challenge came to us of saving lives of the citizens and protecting the economy. In order to save the lives of our people, we have to close some institutions, some marketplace, and we have to stop some vehicle movement. Even air service and railway line have been to stop so as to save our own people. But if we have done like this, it hampers the life of our economy. Please. So those kind of simultaneous problems have been happening last year. But in the meantime, the Modi's government could survive in the midst of those different problems. As we all know, in the field of agriculture, farmer production has been increased. Please conclude. Your time is over. 20%. Your time is over. Please conclude. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay. Please conclude. Yeah. Okay. Let me conclude, Honorable Deputy Chairman. In the meantime, India has done best in the field of fighting about coronavirus. Even in USA, only 60% positive cases have been recovered. But in India, 96% have been recovered in pandemic positive case. Not only this,
the government of India could provide COVID-19 vaccine, which is its own production. It is a great thing. Please end your speech now. We have already taken more time. Please. Yeah, okay. Yeah, let me conclude. So, I thank God, our Lord Jesus Christ, who led Honorable Modi's government so as to attain this great victory. Thank you. Thank you. माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी की अभिभाषण पर संसद में मुझे आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय उपसभापति जी, आज देश जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थनीति, देश की स्वास्थ्य, न केवल देश, दुनिया की अर्थनीति और दुनिया की स्वास्थ्य, ये एक अलग प्रकार की चुनौती भरा क्षण में हम चल रहे हैं। और ये संजोग देखिए, आज हम 2021 की फरवरी महीने में चर्चा कर रहे हैं देश की सबसे बड़ा पंचायत में। अभी अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस पालन किया और 21वीं सदी के 2 दशक पार के हम जब तीसरे दशक में जा रहे हैं, तीसरे दशक की पहला साल, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। जब दुनिया की अर्थनीति को हम कभी कभी समीक्षा करते हैं, कोई भी अर्थनीति विशेष करके अगर हम अमेरिका को कोट करेंगे, थोड़ा उसको अनुशीलन करेंगे, पिछले सदी में अमेरिका की जो 20s रहा, उसको वहां के अर्थशास्त्रियों ने रोरिंग 20s कहा। ये कोई अमेरिका को कॉपी करने की बात नहीं है, लेकिन एक संजोग देखिए, अभी हमको जिस प्रकार की मौका मिला है और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उसकी कुछ उल्लेख किया, ये हमारे लिए लगता है कि ये सदी की, ये दशक, ये रोरिंग 20s के नाम पे दुनिया के इतिहास में हम कुछ लिखने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए हम लिखेंगे कि देश की नेतृत्व करने वाले विश्व की अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी आज देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी में है। इतना तो प्रजातंत्र में राजा साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता को मेरे जैसे व्यक्तियों के प्रति आपकी, राजा साहब मैं विल नहीं कर रहा हूं, राजा साहब मर्यादा में हम सब रहें तो अच्छा है, मैं आपसे सीखता हूं, आपस में बात, लेकिन मेरे नेता को अगर मैं प्रशंसा करूं जिसको विश्व मानते हैं, आपको इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यह प्रजातंत्र की तकाजा है। राजा साहब मैं विल नहीं कर रहा हूं, मैं आपका आदर करता हूं। उपसभापति जी, इस सरकार की और विशेष करके इस नेतृत्व की एक अलग फिलॉसफी है। और इसी सदन में, लोकसभा में, मेरे नेता ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा है कि अब तक जिनके हाथ में इस देश की जिम्मेदारी रही, सबने इस देश की आगे बढ़ाने के, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और हमें अभी मौका मिला है प्रजातंत्र में, किसी की खैरात नहीं। लोग कह रहे थे आपको बहुमत मिला तो इतना अहंकार क्या है, ऐसा अहंकार नहीं है उपसभापति जी, ये विनम्रता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की मैंडेट है। 2014 और 2019 में देश की जनता ने कल्याणकारी व्यवस्था चलाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी दिया है। ये किसी की खैरात नहीं है, किसी की दया पे हम यहाँ आए नहीं है, देश के गरीबों की दया पे हम यहाँ पहुंचे हैं। उपसभापति जी, हमारी कुछ रीत है, कुछ नीति है, कुछ हमारी चरित्र है, कुछ हमारी प्राथमिकता है, मेरे प्रधानमंत्री की कुछ काम करने के तरीके हैं। ये सब तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आजादी के 75 साल पूरा करने के लिए 1 साल पीछे हैं। हम पूज्य बापू की 150 साल जयंती इन दिनों में मनाए हैं। हम इसी साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 साल
उनकी जन्मदिन अभी अभी प्रधानमंत्री उनकी कर्मस्थल कलकत्ता जाके मना के आए और हमें सौभाग्य मिला, हम उनकी जन्मस्थान जाके उनको प्रणाम करके आए हैं। उपसभापति जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार एनडीए की नेता चुनने के बाद अपनी प्राथमिकता गिनाए थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं आज इस चर्चा के अवसर पर उसको दोबारा उल्लेख करना चाहूंगा। नई बात नहीं है लेकिन उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे प्राथमिकता देश की गरीबों के लिए रहेगी, देश की महिलाओं के लिए रहेगी, देश की युवाओं के लिए रहेगी, कृषक के लिए रहेगी, वंचित वर्गों के लिए रहेगी, पिछड़े जाति के लोगों के लिए रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति मित्रों के लिए रहेगी। यह हमारी सरकार की नीति है। सबके साथ सबके विकास, सबकी विश्वास जितना हमारी नीति रहा है, हमारी सरकार चलाने की मूल मंत्र रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम उसी के मंत्र के ऊपर हम गरीब को सबसे ऊपर रख के, गरीब हमारी केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम चलाया, जिसकी कुछ विषय अभी राष्ट्रपति जी ने अपने सरकार के बारे में उल्लेख किया। मेरे नेतृत्व किसी को पीड़ा हो सकती है, निडर है, डिसाइसिव है, निर्णय करते हैं, कोई भी काम हाथ में लेते हैं, स्लोगन नहीं देते हैं, समय अवधि में उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा उपसभापति जी। मैंने कहा मैं सब पूर्व प्रधानमंत्रियों को आदर करता हूं और मेरे नेता अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, अनेक महानुभाव प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बताइए कौन सी प्रधानमंत्री प्रति माह राज्य की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके, भारत सरकार की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके प्रगति मीटिंग चलाते हैं। प्रगति मीटिंग में कहीं रेल पटरी 50 दशक से शुरू हुई है, न्यू रखा गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। कभी सिंचाई की प्रकल्प है, कभी कोई अभयारण्य की प्रकल्प है। पिछले दिनों में जिनके हाथ में दायित्व रहा उन्होंने तो घोषणा कर दिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। मेरे डिसाइसिव नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व प्रगति मीटिंग करके सबको चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करने के काम किया। पारदर्शी सरकार हमने चलाया, जन सहभागिता को आधार करके हमने सरकार चलाई, जन सहभागिता को एक जन आंदोलन के रूप में जन सरकार को हमने ध्यान में रखते हुए शासन चलाया। यह हमारी सरकार की रीत नीति रही है। हमारी, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता रही, कल्याणकारी राज्य हमारी प्राथमिकता रही। जनधन खाता 42 करोड़ लोगों के खुले हैं, टॉयलेट 10.7 करोड़ लोगों के खुले हैं। अगर मैं एक विषय उल्लेख करूं, किसी को बुरा लग सकता है, आजादी जब देश को हुई, देश में टॉयलेट 1% लोगों के पास था। जब 75 में आर्यभट्ट छोड़ा गया, हम महाकाश में अपने पराकाष्ठा दिखाए, तब टॉयलेट देश में 2% था। जब विश्व कप हमने जीता 1983 में, तब भी टॉयलेट की संख्या हमारी 2% थी। जब हम नई सदी में पहुंचे, 2000 में आए, 1998 की तथ्य में दिलाता हूं उपसभापति जी, तब भी हम 18% तक टॉयलेट बनाए थे। जब प्रधानमंत्री जी कामकाज संभाले 2014 में, 2 अक्टूबर तक देश में 39% टॉयलेट था, जो आज 70% ओडीएफ हुआ है। यह प्रधानमंत्री जी की निर्णायक नेतृत्व की एक उदाहरण मैंने दिया। इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ लोगों के घरों में पहुंचाई गई है। एलपीजी कनेक्शन उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने हमें जिम्मेवारी दिया लगाने के लिए। 14 में 13 करोड़ नागरिकों के घर में एलपीजी कनेक्शन था, जो आज बढ़ के 29 करोड़ की ओर जा रहा है। यह उपलब्धि है, यह टाइम बाउंड डिसाइसिव गवर्नेंस है। अभी तो देश में एक नया उन्मादना खड़ा हुआ है, माहौल खड़ा हुआ है। नल में जल पहुंचेगी, राज्य सरकार, सभी, किसी की भी राज्य सरकार हो, आज भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी देश को वादा किया है। माननीय रविशंकर जी हम बैठे हैं, 1000 दिनों में भारत के 6 लाख गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया है। बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मित्रों ने पिछले दिनों में शासन चलाई, 10 साल में 70,000 करोड़ रुपया देके किसान हितैषी का बिला लेके घूम रहे हैं।
मेरे प्रधानमंत्री तो सालाना 70,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी कर रहे हैं, कोई बिचौलियों की बिना मध्यस्थता में। एग्रीकल्चर लोन बढ़ाई गई है, मुद्रा योजना और गरीब कल्याण। जब मैं कहता हूं शिक्षा से सबसे गरीब की भाग्य तब विकास परिवर्तित होती है, उसको अगर उचित शिक्षा मिलता है। 34 साल, मैं किसी की आलोचना आज के दिन में करना नहीं चाहता हूं। 34 साल लगा देश की नई शिक्षा नीति लेके आने के लिए। कोरोना की कष्ट काल में भी मेरे सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी देश की रोजगार के लिए, नौजवानों की आकांक्षा पूरा करने के लिए नॉलेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको ध्यान रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। अभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य गृह की जो लंबे समय तक किसी राज्य की जिम्मेवारी में रहे, मैं उन्हीं के राज्य में अभी गया था पिछले सप्ताह। बैतूल, उपसभापति जी बैतूल जिले की बांछा गांव हम गया था। घोड़ा डुंगरी ब्लॉक बैतूल जिले में हमको सौभाग्य मिला, अनिल उइके नाम के एक गोंड समाज की एक व्यक्ति की घर में उस माता को दर्शन, उसकी पत्नी को दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला। उसके घर में क्या क्या है, उनको चाय पिया मैंने। उनके घर में बोला, बहन जी हमको चाय पिलाओगे? बड़े आदर के साथ हमको चाय पिलाए। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है, बिजली पहुंची है, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में पहुंची है, सोलर लाइट पहुंची है, सोलर कुकर पहुंची है, स्वच्छ भारत में टॉयलेट लगी है, पशुओं के लिए अलग घर बना है, अन्नपूर्णा मंडप के नाम पे किचन गार्डन बनी है, पानी उस गांव में 74 लोगों की, आदिवासियों की गांव है, पानी संरक्षण के लिए वाटर सेट सिस्टम लगी है, हैंडपंप पर्याप्त मात्रा में है लेकिन अभी उत्साह भरी है, नल में जल आएगी। स्वरोजगार के लिए पशुपालन, कृषि, एसएचजी मूवमेंट और बागवानी, और गांव भर में कंक्रीट रोड और नाली की व्यवस्था। अभी दूसरा खुशी उस गांव में इसीलिए है कि स्वच्छ भारत की सर्वे उस गांव में आई है। यह नई भारत की गांव हो रही है। उपसभापति जी, किसी को क्यों पीड़ा होनी चाहिए? भारत अगर अपने पैर पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। आज नई चेहरा बन रही है देश में उपसभापति जी गांव की। मैं विशेष करके राष्ट्रपति जी के भाषण के अवसर पे, मैं पूर्वी भारत से आता हूं, उपसभापति जी आप भी पूर्वी भारत से आते हैं। देश की 1/3 लोग काशी से कोहिमा तक, चंपारण से अंडमान तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्वी भारत में रहते हैं। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अब तक जिन प्रधानमंत्रियों के हाथ में देश रहा सबने बढ़िया काम किया, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी भारत के पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वोदय की कल्पना किया, पूर्वोदय की योजना बनाई, पूर्वोदय के लिए हाथ पकड़ा। हाथ कैसे पकड़ा? गुजरात से चुन के भी रह सकते थे, उन्होंने आया बनारस, पूर्व भारत की मुख्यशाला विद्यानगरी काशी का प्रतिनिधित्व किए। आज क्या हो रहा है पूर्व भारत में? पूर्व भारत के बारे में मैं अगर एक तथ्य उपसभापति जी आपके सामने रखूं, जो गरीब कल्याण की योजना मैंने गिनाई, उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ में से पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत जब मैं कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, समूचा पूर्वोत्तर सिक्किम से लेकर त्रिपुरा तक, यह इलाका में 8 करोड़ में से आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला की लाभार्थी उसी इलाका में है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर देश में 2 करोड़ बने हैं, 1.12 करोड़ इसी पूर्वी भारत में है। अगर टॉयलेट 10 करोड़ बना है तो उसी में से 4.5 करोड़ इसी पूर्वी भारत में है। अगर इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ देश में लगे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा पूर्वी भारत में है। पीएम किसान योजना में एक किस्त में सालाना 16,217 करोड़ आज जाती है। एलपीजी कनेक्शन, मैं तो उज्ज्वला को पहले तथ्य दिया, एलपीजी कनेक्शन लगभग 29 करोड़ में से 11.5 करोड़ पूर्वी भारत में है। जनधन की खाता 41 करोड़ 74
हजार जनधन खाते में से 16 करोड़ 22 लाख जनधन खाता पूर्वी भारत में है। ये और एकल विद्यालय, अभी अभी बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है एकल विद्यालय की आदिवासी बच्चों के लिए, जनजाति बच्चों के लिए 20 करोड़ वाला एकल विद्यालय 38 करोड़ भी खर्चा होगा। पूर्वी भारत में 304 संख्या में आज एकल विद्यालय खोला जा रहा है। यह केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए नहीं है, वहां से पूर्वी भारत से ज्यादा लोग माइग्रेंट लेबर आते हैं। रोजगार वहीं हो, उसके लिए खनिज, आयरन और स्टील, कोयला, रोड सेक्टर, रेलवे, इंटरनेट, वाटरवेज और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में तो हमने पहली बार पूर्वी भारत में नेचुरल गैस की पाइपलाइन जगदीशपुर से लेकर हल्दिया तक खींचा है। इतना ही नहीं है, बरौनी से पूरा नॉर्थ ईस्ट की 8 राज्यों में प्रधानमंत्री के निर्देश में इंद्रधनुष योजना शुरू किया गया है। पहली बार भारत सरकार पूर्वी भारत की विकास के लिए गैस पाइपलाइन में तिजोरी से पैसा दिया है। यह प्रधानमंत्री जी की पूर्व भारत की ढांचा के लिए तत्परता है। और उड़ान योजना में उपसभापति जी, मेरे मोह हो रहा है 2-3 चीज और उल्लेख करूं। जमशेदपुर, झारसुगुड़ा, दुर्गापुर, दरभंगा, आपकी पुराने राज्य दरभंगा, देवघर, आप उससे जुड़े रहते हैं। आसाम की पासीघाट, अरुणाचल की पासीघाट, लोअर आसाम के रूपसी, डिब्रूगढ़ जिले की एक नया एयरपोर्ट है। और होलांगी, अरुणाचल के ग्रीनफील्ड एयरफील्ड में, इसलिए ये सब 6-7 पूर्वी भारत की एयरपोर्ट की नाम लिया। ये कोई पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि रहा, जब तक पूर्वी भारत पश्चिम और दक्षिण के बराबर नहीं होगा, भारत में समूचा विकास संभव नहीं है। इसीलिए यह सारे सेक्टर में आज निवेश किया जा रहा है। डीएमएफ, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, और सर्वोपरि मैं कहूंगा, कुछ मित्रों को यह बात पीड़ा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में तर्क हुई है। जब 2012-13 में देश एक विचित्र स्थिति में पहुंचा, आखिर ये नेचुरल रिसोर्स किसके हैं? ये खनिज संपत्ति उस आदिवासी के है कि नहीं है? उस राज्य के हिस्सा में आएगा कि नहीं आएगा? उन राज्यों को क्या मिल रहा है? क्या रॉयल्टी सिर्फ उनके अधिकार है? क्या मिल रहा है उन राज्यों को? लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या योजना है। मैं बताता हूं क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दिनों में कहा नेचुरल रिसोर्स के ऊपर मूल अधिकार भारत के नागरिकों की है। कैसे प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है? हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में कोयला हो, आयरन हो, बक्साइट हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम रिसोर्स हो, यह सारे की संशोधन किया, नीतियों में संशोधन किया। नीलामी की नई व्यवस्था लाई, विशेष करके कोयला और आयरन और पूर्वी भारत की पूंजी है, बक्साइट पूर्वी भारत की पूंजी है। नई नीलामी व्यवस्था लाया गया। पहले तो बिना मूल्य के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौन चिट्ठा में दे रहा था, उसकी आज मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहता हूं। कौन पैरवी कर रहा था, कौन चिट्ठा में दे रहा था, कौन फलाना पार्टी की ट्रेजरर साहब हां करने के बाद मंत्री जी उसको अनुमोदन कर रहे थे, ये आज विवाद की विषय हो जाएगा, मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हमने नया नीति लाया, ट्रांसपेरेंसी लाई, हमने नीलामी किया और एक भी पैसा दिल्ली की तिजोरी में नहीं आता है। उड़ीसा में नीलामी की पैसा उड़ीसा की लोगों के कल्याण के लिए भुवनेश्वर की तिजोरी में जाता है। रांची की पैसा रांची में जाता है, झारखंड की पैसा, बंगाल की पैसा कोलकाता जाती है, वहां की सरकार के हाथ को पैसा दिया जाता है खर्चा करने के लिए। हमने कोई 3 राज्य में भाजपा की शासन नहीं है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। विकास के कामों में आखिर गरीब किसकी है? देश की गरीब है, उनको सशक्त करना। मैंने जब कहा कि मेरे सरकार की कुछ नीति है, कुछ रीत है, मेरे सरकार की रीत नीति कल्याण है, गरीबों की कल्याण है, हमने इसको करके दिखाया। उपसभापति जी, कोविड मैनेजमेंट में कई चर्चा हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन 2-3 चीज कहना चाहूंगा। एक पूर्व भारत संपर्कित और एक
उसकी मेरा क्या साक्षात अनुभव कैसे हुआ, कोविड के कारण मेरे को क्या गौरव आया, मैं आपको 2 शब्दों में 2 विषय पे बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना किया और उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना चालू की। जब माइग्रेंट लेबर पूर्वी भारत की ओर पहुंच गए, बिहार पहुंचे, बंगाल पहुंचे, झारखंड पहुंचे, उड़ीसा पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट पहुंचे, चुनौती रहा कैसे उनको संभाले। 50,000 करोड़ रुपया की 50,000 करोड़ रुपया की बजट लगाई गई। 50 करोड़ मैंडेट्स की सृजन किया गया। देश की 116 जिले में जिससे ज्यादा पूर्वी भारत की है। हमने रोजगार की जिम्मेदारी लिया। मेरे प्रधानमंत्री मुंह छुपा के भागने वाला नेता नहीं है, समस्या को सामने से देश को साथ लेकर लड़ने वाला नेता है। हमने उसको कोरोना को इसीलिए आज हरा पाए। आज कोरोना की उपलब्धि क्या है? उपसभापति जी, मैं बीच में प्रधानमंत्री जी की संदेशा लेके कुवैत गया था। वहां की तत्कालीन राजा 4-5 महीना पहले गया था। वहां की तत्कालीन राजा की देहांत हो गया। भारत की और संपर्क उनके साथ अच्छा है। प्रधानमंत्री जी की निजी मित्र रहे। मैं उनके लिए शोक संदेश नए राजा जी के पास लेके गया। नए राजा का स्वागत का पत्र, पुराने राजा की शोक पत्र मैंने लेके गया। मैंने उनको मिला। मेरे को लगा कि मेरे जो प्रधानमंत्री जी की नम्रता, उनकी वक्तव्य को मैं पासन कर दूं। जब मैंने उठने लगा, उन्होंने कहा आप थोड़ा बैठिए, मेरा एक संदेश है आपकी प्रधानमंत्री के लिए, उसको आप थोड़ा पहुंचाइए। मैं थोड़ा बैठा, फिर उनके साथ चर्चा हुई। उन्होंने कहा हम आपके आभारी हैं, आपके प्रधानमंत्री के आभारी हैं। मैं प्रश्न पूछने के पहले उन्होंने कहा पूछो क्यों। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि जब हम कोरोना के संकट में रहे, हमारे देश में डॉक्टर नहीं थे, हमारे देश में नर्स आपके देश से आते हैं। हमने आपके प्रधानमंत्री को फोन किया, उन्होंने डॉक्टर, नर्स, दवाई, मास्क, पीपी किट ये सब उपलब्ध करवाया। मैं आपके प्रधानमंत्री के पास आभारी हूं। उपाध्यक्ष जी, मेरे रोंगटे खड़े हुए। ये आभार प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं था, 130 करोड़ भारतीयों के प्रति था। यह कुवैत की कहानी नहीं है। बहुत लोग हमको सांप्रदायिक कहते हैं। मैं तो ये कहूं, मैं तेल विभाग के काम देखने के कारण खाड़ी के देशों में जाता हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता मुस्लिम राष्ट्र में, खाड़ी के देशों में जितना है, शायद भारत की कोई प्रधानमंत्री को इतना सौभाग्य नहीं मिला है। और अभी कोरोना उसको और ऊंचाई तक पहुंचा है। यह कोई प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक नई दुनिया में पहुंच रहे हैं। आज वैक्सीन की तो नई कहानी आई है। वैक्सीन की नई कहानी आई है। हमारी नेतृत्व को विश्व की नेतृत्व आशा की नजर से दिख रहे हैं। और सब जब विपत्ति आती है, उस समय में सबकी चेहरे ध्यान में आ जाता है। विपत्ति किसमें समाप्त करता हूं उपाध्यक्ष जी। विपत्ति जब आती है, सबके चेहरे आ जाते हैं। संपूर्ण देश, कनाडा किसकी पड़ोसी है मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कनाडा की अपेक्षा भारत के प्रति है। खाड़ी की देश की अपेक्षा भारत की प्रति है। ब्राजील, लैटिन अमेरिकन कंट्री किसके पास है मैं कहना नहीं चाहता हूं। यूरोप छोड़ के भारत की प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हैं बोल्सोनारो जी। यह मेरे नेतृत्व की पराकाष्ठा है, यह मेरे रीति और नीति है। उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश पे ऊर्जा विभाग की काम देखता हूं। अभी बहुत बात कहा गया किसानों के बारे में, ठीक है, यही प्रजातंत्र की तकाजा है। जोर जोर से बोल के, नाटकीय ढंग से बोलने से सच झूठ सच नहीं हो जाता, या सच झूठ भी नहीं परिवर्तित हो सकता है। तथ्य के आधार पर तर्क होनी चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने ऊर्जा के बारे में कई सारा विषय कहा। प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है भारत में एनर्जी जस्टिस लाने के लिए। सस्ते दामों में एनर्जी मिले, सबको एनर्जी मिले, एफिशिएंट एनर्जी मिले, एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी रहे, बिजली आके कट ना जाए, ऊर्जा की स्वच्छता रहे, ऊर्जा की सिक्योरिटी रहे। इसी के नाम है एनर्जी जस्टिस। विश्व
नरेंद्र मोदी जी की एनर्जी जस्टिस मॉडल को आज कॉपी कर रहा है। उसमें मूल बिंदु क्या है? ऑल्टरनेटिव एनर्जी में मैं एनर्जी की पूरा विषय को उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में कहना चाहूंगा, जिसके बारे में अभी राष्ट्रपति जी की भाषण और बजट में थोड़ा उल्लेख किया गया है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, हाइड्रोजन मिशन बना के विश्व की 1 नंबर देश हम बनने वाले हाइड्रोजन इकोनॉमी को खड़ा करने में। और कहां से आएगा हाइड्रोजन? हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कहते हैं। हमारे देश में सोलर एनर्जी को कैप्चर करना, बायोफ्यूल्स बायोगैस को एनर्जी में परिवर्तित करना और उसी में से दुनिया की विज्ञान की सबसे बड़ा आविष्कार हाइड्रोजन बनाना, उसी में हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारे उद्योग धंधे को बिना पर्यावरण को खराब करते हुए चलाने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी में है। यह आज सपना देख रहे हैं। उसकी लाभ किसको मिलेगा? अभी एमएसपी के बारे में बहुत तर्क रखा जाता है, तथ्य रखा जाता था। मैं एक ही विषय करके मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष जी, एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान की 4-4 पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला। अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए। कब आपने कानून में लाया था? आप 13-14 में हमको शासन छोड़ के गए। मैं 3 कमोडिटी का नाम लेना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, गेहूं, धान, दलहन। ये 3 कमोडिटी में 13-14 में आपने एमएसपी कितना दिया था? आपने 13-14 में गेहूं में 63,000 करोड़ एमएसपी दिया था। अब यह हमने 20-21 में 1,72,752 करोड़ एमएसपी दिया है। मेरे पूर्व वक्ता पिछले दिन विजयपाल सिंह जी इसको उल्लेख करे तो मैं दोहरा रहा हूं। कुछ लोगों को सत्य को सुनना कष्ट होता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को सुनने से ही मोक्ष मिलेगा। ये पहला वाला मैंने कहा धान के बारे में 63,000 करोड़ रुपया पहले था, 1,72,00,000 धान के बारे में। गेहूं 13-14 में 33,874 करोड़ रुपया, 33,874 करोड़ रुपया में एमएसपी उन दिनों की सरकार ने दिया था। इसी साल हमने 75,050 करोड़ रुपया एमएसपी दिया। दाल तो न्यूट्रिशन होता है, ये तो कार्बो होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, व्यक्ति की ऊर्जा के लिए ही आवश्यकता है। आपने कितना दाल खरीदी थी मान्यवर? इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, गला फाड़ के भाषण दे रहे थे। आपने 236 करोड़ रुपया की आपने एमएसपी दिया था और मोदी जी ने पिछले साल 10,500 करोड़ रुपए की एमएसपी दिया है। पर हमें प्रश्न पूछते हो एमएसपी कहां गया? कुल मिला के आपके समय में एक साल में 97,110 करोड़ एमएसपी दिया गया था और हमारी समय में एक साल में वो संख्या बढ़ के लगभग 2,60,000 करोड़ हुआ है। अब हमें प्रश्न पूछते हो, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को, किसान हितैषी को आप प्रश्न पूछते हो। और मेरे मित्र हमारे उड़ीसा से आते हैं, वरिष्ठ किसान बैकग्राउंड से आते हैं, प्रसन्न आचार्य जी। कल इनका मैंने आज उड़िया अखबार में पढ़ा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे? प्रसन्न जी, आप लंबे वरिष्ठ संसदीय व्यक्ति हो और आपके साथ युवा साथी सस्मित भाई भी है, दोनों पढ़े लिखे मेरे राज्य की 2 रत्न हो आप। थोड़ा स्वामीनाथन जी की कमेटी की रिकमेंडेशन ठीक से पढ़ लेते। और स्वामीनाथन जी की इस कमेटी को हमने लागू किया, मोदी जी ने लागू किया, 1.5 गुना आमदनी हमने लागू किया, उसको थोड़ा उन्हीं की, हमारी बात छोड़ दीजिए। मोदी जी को आपको भरोसा नहीं है, धर्मेंद्र पे आपका भरोसा कम है, मैं प्रतियोगी हूं आपका, प्रजातंत्र में तो इतना होना ही चाहिए। लेकिन संबी सस्मित, थोड़ा आप अभी भाषण दोगे, थोड़ा इसके पहले मेरा अनुरोध रहेगा, स्वामीनाथन जी ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन के लागू करने के बाद क्या कहा उसको पढ़ के थोड़ा ईमानदारी से भाषण देना। प्रसन्न भाई, आप मेरे बड़े हो, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे ये मेरा अपेक्षा नहीं था। कम से कम आप तो विद्वान हो भाई, आप कम से कम तथ्य सामने रखते, गुमराह मत करिए। अभी दूसरा ऑल्टरनेटिव एनर्जी में किसानों के साथ संपर्क किया, उसी में मैं आके वक्तव्य खत्म करूंगा। एक उदाहरण दूंगा, अटल जी जब सरकार में थे उन्होंने कहा हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। नीति बनी, अटल जी गए तो नीति को खटाई में डाल दिया गया। 2014 में हमने आके जब देखा, पीएम ने कहा कि देखो भाई एथेनॉल फिर ब्लेंडिंग करना है, किसानों को पैसा जाएगा, गन्ना किसानों को पैसा जाएगा। तो उसमें हमने पाया 12-13 में
35 करोड़ लीटर पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने के लिए हमने खरीदा था। तेल कंपनियों ने आवश्यकता की 0.67% से नीचे हमने खरीदा और उसकी मूल्य लगभग 492 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया। अब पिछले साल हमने योजना बनाई, योजना बदली, हमने इसी साल, उपाध्यक्ष जी मैं तथ्य रख रहा हूं, मन की बात नहीं कह रहा हूं, कहानी नहीं कह रहा हूं, गप्पे नहीं मार रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। एमएसपी के बारे में चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुने क्या मोदी जी की विजन है। 2021 में एथेनॉल हमने 325 करोड़ लीटर खरीदने का योजना बना ली है, खरीदना शुरू कर लिया, जिसकी मूल्य होगा 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया ये हमारी आवश्यकता के 8.5% पूरा करेगा। इसको हम आगे आने वाले दिनों में 20% ले जाएंगे। एथेनॉल, कंप्रेस बायोगैस, 5,000 कारखाना लगने वाला है। गोवर्धन योजना हमने शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी ने। गोबर, खेतों की जो वर्ज्य वस्तु है, शहरों की जो वेस्ट है, जंगलों की जो वेस्ट है, जो कार्बन है, जो बायोमास में कार्बन है, सबको एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा। चंद दिनों में गाजीपुर जैसे ये कचरे की ढेर को साफ किया कर दिया जाएगा और उसी एनर्जी को जो हम बनाएंगे, हम किसानों की खाते में 1 लाख करोड़ रुपया की एडिशनल इनकम हम देने वाले हैं। उसी में से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। यह हमारी सरकार की विजन है, हमने करके दिखाया। किसी को वाह लगे, जिन्होंने किया कभी जिंदगी में नहीं, सिर्फ लोगों को बातें सुनाए, हमारी खानदान की कहानी सुनाए। सोने की चामच से जो लोग जन्मे हुए हैं, उनको कैसे पचेगा चाय बेचने वाले की बेटा, जिनकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांज के अपने परिवार चलाया था। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे परिवार से व्यक्ति, लड़का जब आके देश के कामकाज संभालेगा, प्रधान सेवक बनेगा, किसके बारे में चिंता करेगा? कुछ लोगों को तो पीड़ा होगा ही। सोने की चामच लेके जन्म करने वाला सामंतवादी लोग, उनको आज पीड़ा हो रही है। इसीलिए सरकार के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं। उनको देश की प्रजातंत्र में जो भगवान है, उनको सब देख रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं इसी शब्द के साथ। हमारी प्रतिबद्धता है कल्याण के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है देश के विकास के लिए। उड़ीसा की एक महान दलित और पिछड़े और आदिवासी समाज समूह के जो संत रहे, प्रेरक रहे, संत कवि भीम भोई, उन्होंने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसकी उक्ति यूनाइटेड नेशन में भी लिखा गया है। मोजी बना पछे नरक के पड़ी था जगत उद्धार हो। भारत के विचार वसुधैव कुटुंबकम में है। हमने कोरोना में विश्व को एक माना, मानवता को एक माना। हमने तय किया है, अगर भारत की गरीबों की कल्याण करेंगे तो विश्व की कल्याण होगा। और उसमें अगर पूर्वोदय की चिंता किया जाएगा, पूर्वोदय में अर्थनीति की विकास किया जाएगा, रोजगार की चिंता किया जाएगा, वहां की स्वाभिमान अधिकार के बारे में चिंता किया जाएगा, तब देश विकास होगा। इसी भीमो भोई की फिलोसफी भारत की अनेक संतों ने अपने अपने भाषा में किया है। यही हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की ध्येय वाक्य है। आज ऐसे एक सरकार इसी संकट की क्षण में, इस संधि में आज देश की शासन संभाल रही है, सेवा कर रही है। यह यशस्वी होगा, देश हमारा यशस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपसभापति जी, आपने हमको मौका दिया, अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान चल रहे किसान आंदोलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आज 4 फरवरी को किसान आंदोलन का ये 72वां दिन है। सारी सर्दी, बारिश में लाखों की तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस दौरान 11 राउंड बातचीत के, सरकार और किसान के बीच बेनतीजा बातचीत के 11 राउंड हुए। फिर भी आज जो स्थिति है, टिकरी बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-5 लेन, 17 किलोमीटर लंबा धरना। सिंगू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 21 किलोमीटर लंबा धरना। अलग अलग
गाजीपुर बॉर्डर पे, बाकी जगह कई लाख लोग आज भी इन धरना स्थलों पर विश्वास रखे, अपने मन में शांति और संयम से बैठे। पिछले इन 72 दिन में इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। ये वो लिस्ट है। कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सीमा पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है, उनके नाम मैं रखना चाहता हूं। मैं इसको सभा पटल पे रखना चाहूंगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह गुंदियाना गांव के, गड्डी गुजरान करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल, जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है। पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बड़ौदा गांव के भाई स्वर्गीय भाई अजय कुंडू, जिनके मैं घर गया, लगभग इनके परिवारों से मिलने गया, जिनके घर पे एक उनकी विधवा और 3 बच्चे। विधवा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नौकरी कर पाएगी। 3 लड़कियां हैं, तीनों अभी स्कूल में अनमैरिड है। कैसे उनकी शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? सैकड़ों जान चली गई, मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। आज मैं देख रहा था कि मैंने सभी भाजपा की तरफ से जो लोग बोले, उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना। इन 194 परिवारों के लिए कोई संवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है, जिक्र तक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे, 15 साल तक मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने एक किसान का जरूर जिक्र किया 26 जनवरी को, जिसने अपनी जान गंवाई। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं। मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में को कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे। उपचुनाव के बाद उपचुनाव हरियाणा के अंदर सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हैं। जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है? मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये जो धरने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं वहीं से आया हूं। मैं इन धरनों पे गया हूं, एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के मैंने किसान से बात करी है, मैं इन घरों में गया हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं, केवल सच्चाई रखना चाहता हूं। ये स्थिति में हम कैसे पहुंचे? 5 जून 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश जिनकी आवश्यकता तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे अभी कहा डेरेक ओब्रायन जी ने। सामान्यतः सदन, दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से एक्ट कानून लागू हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया। आंदोलन शुरू हो गया पंजाब में, 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा हरियाणा और पंजाब में। कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक टोल पे किसान बैठा, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक वहां बैठ के धरना देने के लिए आना चाहते थे। शांति प्रिय तरीके से चले। हरियाणा की सीमा में जैसे ही आए, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। हरियाणा की सरकार ने
हमलावर हो गई हरियाणा की सरकार। सोचा था उस समय किसान केवल शांति से जा रहे थे, सोचा था रोक लेंगे, मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए। 25 नवंबर को दिल्ली की सीमा पे पहुंचे। वहां पर देश की राजधानी की सीमा सील कर दी गई और वहां से धरना शुरू हुआ। उसके बाद सारी सर्दी, बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत। और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि। और 5 घंटे के बाद उनको बताया गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद उठ के गए। 26 जनवरी की घटना का जिक्र हुआ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो हुआ वो असहनीय। कहीं कोई उपद्रव होता है, असहनीय। उसकी जांच भी होनी चाहिए, जो दोषी भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन न्याय का तकाजा है, दोषी तो बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं। यह व्यवस्था है न्याय की हमारे देश में। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी। उन्होंने सबने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग कुछ राजनीतिक दल से संबंधित भी हैं, कई लोग कईयों के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तथ्य सामने आए, दोषियों के खिलाफ सजा हो। सारे किसान संगठनों ने कहा उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे, 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए। लोग कहेंगे कि किसान ने अपना भी हमारे साथ, अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहां पे जहां पे बैठे हैं उन्होंने किया है। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई इस सदन को और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। और यह आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सरकार झुक नहीं रही। एक और वजह से आंदोलन अलग है, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदौली का आंदोलन हो गुजरात का। किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से संयम से बैठे रहे। इनकी नीयत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को। न्याय का तकाजा था, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन क्या हुआ इस घटना के बाद? इस घटना के बाद निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया। झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया, प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा प्रचार तंत्र। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया। कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप यहां बैठा है
जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है। अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है? मैं सदन से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई भूमि, मुझे गर्व है। मैं इस भूमि का एक बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। ये भूमि, ये वही भूमि है, मैं केवल हरियाणा की बात करूं, हर 10वां सैनिक फौज का आज भी हरियाणा से। 20% हमारे खाद्य भंडार, आज हरियाणा का किसान मेहनत करके 20% खाद्य भंडार काम करता है। देश के लिए 40% मेडल, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लाने का काम करते हैं। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में उस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उससे ज्यादा कौन देशभक्त हो सकता है? मैं पिछले हफ्ते बताऊं, मैं अपने इलाके की बताना चाहता हूं, इस इलाके के बारे में। मैं पिछले हफ्ते में मेरे क्षेत्र में, मेरे गृह क्षेत्र में 3 डेड बॉडी आई, एक अरुणाचल से, एक लद्दाख से। सिवाना गांव बेरी के अंदर बीएसएफ के जवान शहीद सचिन, गांव जुडी कोसली के अंदर शहीद दीपक कुमार यादव, और खरखड़ा गांव के अंदर शहीद कैप्टन जगतार सिंह। 3 बॉडीज वापस आई, 3 बॉडीज देश की सीमाओं से वापस आई, शहादत दिए। और 1 दर्जन किसानों की, उनके परिजनों की डेड बॉडी दिल्ली की सीमाओं से उन्हीं गांव में वापस गई। मगर दुर्भाग्य यह है उसी जवान को, उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और कीलें लगा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीलें लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की कीलों के रूप में आपने लगाई हैं। मगर यह भी मैं बोलना चाहता हूं आपसे, हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन कीलों को, इन नफरत की कीलों को किसान, इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। इस सब के बाद भी सच आएगा। सच में ताकत है, सच आएगा। इंटरनेट, आज मेरे पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद है। आपके इंटरनेट, आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी। सच बाहर आएगा, एक दिन सच जरूर आएगा और हम न्याय और अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे। एक आशा जगी थी प्रधानमंत्री, 3-4 दिन पहले एक बात आई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूं, एक टेलीफोन कॉल, मैं बहुत नजदीक हूं, एक टेलीफोन कॉल की इंतजार है। आशा कुछ जगी थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल, और यहां तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे, वो फैसिलिटी भी वहां से अगले दो प्रधानमंत्री जी के बाद के तुरंत बाद हटा दी गई। शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार, जहां इन धरनों से लाखों किसान जहां डटे हुए हैं, वहां से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है। दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहां भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसान के नजदीक है, भाई एक फोन कॉल दूर है। मैं पूछना चाहता हूं कौन है जो मगर प्रधानमंत्री जी और किसान के बीच में ये दूरियां पैदा कर रहा है पिछले 3-4 दिन में। ये किसान देश की राजगद्दी पे कब्जा करने नहीं आए। ये किसान क्या मांग रहे हैं? ये केवल ये मांग कह रहे हैं कि जो सरकार ने दिया उसको भी लौटाना हम चाहते हैं।
जो जिस हाल में हम थे, जो हमारे पास बचा था, उनको इन 3 कानूनों के माध्यम से ना छीनो। केवल ये गुहार करने आए हैं। किसान आखिर आपसे क्या मांग रहा है? एमएसपी को बचाने की और उसको मजबूत करने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। वही एमएसपी जो संविधान सभा में 1948 में सबसे पहले मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिसकी मांग करी थी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी फसल पे देना पड़ेगा, किसान को बचाना है, तो उस एमएसपी को मजबूत करने, उस एमएसपी को बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस एपीएमसी और उस मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए किसान लड़ रहा है जो चौधरी छोटू राम ने 1938 में ज्वाइंट पंजाब, पेशावर से पंजाब तक, पेशावर से पलवल तक जब एक राज्य था, उस समय जब मंडी व्यवस्था बनी थी, उस मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस उपभोक्ता को बचाने के भी लिए लड़ाई लड़ रहा है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो भंडारण, असीमित भंडारण। माननीय दीपेंद्र जी कंक्लूड करिए, आपका समय हो गया। ऑलरेडी समय अधिक हो गया। हाँ, समय अधिक हो गया। तो उस उपभोक्ता को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। जो उपभोक्ता, जो असीमित भंडारण, जमाखोरी की छूट के बाद किसान कह रहा है कि मुझसे अगर आप सस्ते में खरीद कर उसको भंडारण करके और उपभोक्ता को बहुत महंगे में बेचेंगे तो जो मुनाफाखोरी होगी उससे उपभोक्ता को भी बचाना है। उस उपभोक्ता के लिए भी किसान लड़ाई लड़ रहा है। किसान ये लड़ाई लड़ रहा है। आज किसान इनके साथ साथ अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस सरकार से एक किसान के बेटे होने के नाते हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, स्थिति की गंभीरता समझे। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात समझे, किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले सरकार। किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने, उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं कंक्लूड करता हूं अभी। उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के रंग दिए गए, मैं एक उदाहरण देके, प्लीज आपने एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरी पार्टी का टाइम, एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक अखबार में, आज एक अखबार में बात छपी, दैनिक भास्कर अखबार में। अंदाजा लगाएं आप कि कौन बैठे हैं। मुझसे पूछा गया अभी कि कौन बैठे हैं यहां पर। कहा गया बीजेपी की तरफ से। फिक्र, बड़ौदा के 78 साल के पति का हाल जानने आंदोलन में पहुंची रामरती। 54 दिन के बाद पति को देखकर छलके आंसू, बोली, बालका के बाबू तू ठीक से। 54 दिन। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, किसानों की बात माने हाथ जोड़कर, और आत्ममंथन भी करे सरकार। यह आत्ममंथन का भी समय सरकार का। जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद दीपेंद्र जी। ऑनरेबल श्री विनय विश्वम जी। Tomorrow, sir. Tomorrow. Please continue. No, sir. No, sir. Please continue. You have 5 minutes. No, no. Today, then tomorrow. Okay, then okay. Yes. Okay. You will continue. Thank you, sir. Sir, I am sorry to say that I can only oppose this motion because the speech of the President runs against the national sentiments and the truth of the country. Ample times the President mentioned about the farmers. 27 times farmers were mentioned in the address. And often the government speaks aloud as Jai Jawan, Jai Kisan. So now the country has come to add one more to that. Jai Jawan, Jai Kisan, and the government adds
Jai Adani, Jai Ambani, Jai FDI, and Jai corporates. That's the spirit of this address. So how can a country support such an address when the real people who feed this country are on a struggle path since months in the bitter cold of Delhi? Sir, the Honorable Prime Minister used to say about the Man Ki Baat. I request the PM to go and listen to the Man Ki Baat in Singhu border, in Tikri border, in Kasipur, and to Shahjahanpur. There is the real Man Ki Baat, not in the power corridors, sir. And this address completely ignored them, neglected them, and at sometimes the address even insulted them. Sir, the truth are not mentioned in this address. Sir, in the borders of Delhi we can see the government has opened a war front with concrete barricades, with iron fences, with thorns and water cannons. For what? To suppress the movement of the Annadatas. You call them in loud words as Annadatas, but to make them retreat from the struggle, you use all kinds of forces. Sir, the truth is that the government is not concerned even a bit about the real people who are the India's Annadatas. And the country now understands it, sir. Sir, I have been there so many times to all the borders, not as a leader, not as an MP, but as an Indian I went there to express my solidarity with them. What I could see there is simple, a war front. A war front. One may go there and see as if it's a border with Pakistan or even China, because the paramilitary forces and the government forces armed are there ready. For whom? To treat them like enemies. Sir, high time for the government to tell this country that all the Christians, the country's enemies. If they are not, the government should listen to them. And if they are not the country's enemies, the government should retreat from the present move and repeat the black laws. This is the one thing. Sir, the fact is that, again, so many facts are hidden in the address. So I repeat, the fact is that 86% of the farmers in India are having only less than 5 acres. Vinay ji, rest of the time you can use tomorrow. Thank you, sir. So now this special mention, Sri Trichu Sivaji. Kindly read title and I lay on the table of the sir my special mention on growing incidents of suicides in India. Thank you, Trichu ji. Sri Mahesh Poddar, Manye Mahesh Poddar ji. From Lok Sabha, sir. Lok Sabha. Sir, I lay on the table. कृपया शीर्षक पढ़ें और ले कर दें. जी महोदय, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के प्रति झारखंड में लगातार बढ़ती जा रही उदासीनता और केंद्र सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता के संदर्भ में मैं अपना प्रस्ताव धन्यवाद माननीय महेश जी. श्री महाराजा संजो आबा लेशंबा. From Lok Sabha, sir. Lok Sabha. Please read title of your special mention and lay it. Sir, demand to grant declaration of Kangla, ancient capital of Manipur, as the World Heritage Site. I lay my paper Thank you. Table of this house. Sir. Thank you. Sri Nawam Rebia. Sir, from Lok Sabha. The subject matter of my special mention is construction of steel superstructure bridge. From Lok Sabha? Yes, sir. Please read title of your special mention and lay it. Construction of steel superstructure bridge over river Pachin to connect Naharlagun railway station from Itanagar National Highway 415 via Lekhi village in Arunachal Pradesh. I lay it on the table of the House. Thank you. Mani
Ilamaram Karim ji, special mention. Please lay. Sir, subject, illegal encroachment of land owned by the University of Hyderabad by private entities. I lay my submission. Thank you. Mani Ramnath Thakur ji. Mani Ramnath Thakur ji. Absent. लोक सभा कृपया शीर्षक पढ़कर लेकर माननीय रामनाथ जी। उपसभापति जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन विषय पर फैसला आया है। लेकर दें। मैं इसे पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। The House stands adjourned till 9 a.m. on Friday, on 5th February 2021. Hello and welcome to Rajya Sabha TV. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan. Respected sir, with your permission, on behalf of my colleagues, Srimati Smriti Zubin Irani and Dr. Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan. Respected sir, with your permission, on behalf of my colleagues, Srimati Smriti Zubin Irani and Dr. Jitendra Singh, I lay on the table of the House the papers listed against their names in serial numbers 1 and 2, respectively in today's revised list of business.
Message from Lok Sabha Secretary General to report. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at sitting held on the 3rd of February 2021 adopted a motion recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect 10 members from amongst the members of the Rajya Sabha to join in the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year, beginning from the date of the first sitting of the committee, and communicate to the Lok Sabha the names of the members so elected. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change, Srimati Seema Dwivedi, Yes, sir. Lok Sabha. Sit, ma. Okay, I noticed. Please go ahead. महोदय, मैं परमाणु ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों विभागों की अनुदानित मांगे 2020-21 के संबंध में विभाग संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के क्रमशः 326वें से 332वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 333वें, 334वें, 335वें, 336वें, 337वें, 338वें और 339वें प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करती हूँ। इन प्रतिवेदनों को 30 दिसंबर 2020 को राज्यसभा में माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और माननीय सभापति द्वारा इन प्रतिवेदनों को परिचालित करने के आदेश दिए गए थे। इन प्रतिवेदनों की एक प्रति माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी अग्रेषित की गई थी। धन्यवाद। Reports of the Department-led Parliamentary Standing Committee on Railways, Saroj Pandey. Nowadays, trains are coming on time. All right. Please. Only metro is not coming. माननीय महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के 2020-2021 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पे रखती हूँ। Statement on the Department-led Parliament Standing Committee on Railways, Saroj Pandey. One more statement. Statement भी रख दिया? No, statement is report is different. कुछ मैं समझ नहीं पाई। नहीं, दूसरा कह रहे हैं। Okay. Statement सभा का पटल पर रखता हूँ। Minister can do it. Okay. Reports of the Department-led Parliamentary Standing Committee on Urban Development, Sri Sushil Kumar Modi. So, I rise to lay the third and fourth reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Urban Development, listed against my name in today's list of business. These reports were presented to Honorable Speaker on 11 September 2020. Honorable Speaker had permitted printing, publication and circulation of the report under Rule 280. These reports were also placed before Honorable Chairman Rajya Sabha for his perusal. Statement regarding ordinance, Sri Nityanand Roy. Kishan Reddy, Sri J. Kishan Reddy. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of Honorable Home Minister, Sri Amit Shah ji, I raise to lay a statement in English and Hindi explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Ordinance 2021. Okay, no? Sri Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021, Introduction. Sri Nityanand Roy, Sri Kishan Reddy to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of
Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. 2021. Bill 2021. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please raise their hands and say aye. Those in favor, those will against, please raise their hands and say no. I think the ayes have it, ayes have it, ayes have it. Introduce the bill. Minister. I introduce the bill, sir. It is introduced. Continue discussion on President's address. Thanks. Motion. Professor. Vishay. In view of the fact that Central Hall is able to accommodate 240 members, I would request you to review the seating arrangement in the Rajya Sabha to accommodate more members in the House so that there is an atmosphere of debate. We'll discuss it because to my knowledge, original idea for Central Hall is 244. But after I reviewed, I sent a word to the Speaker saying that then you will not be following social distance. So that has been reduced to 100 odd. I don't exactly remember, but you meet me, we'll discuss. No problem. The discussion, Professor Manoj Kumar Jha. मनोज जी हाँ प्लीज बैठ के भी बोल सकते खड़े होकर भी बोल सकते जैसा सर खड़ा होना चाहूंगा पीठ के सामने खड़े हो जाइए शुक्रिया सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया सभापति महोदय दिक्कत यह है कि उनसे जिनसे होती है इंसान को हमेशा तकलीफ वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाले हैं माननीय सभापति महोदय एक पंचतंत्र में एक कहानी है चित्ररथ नाम के राजा हुआ करते थे उनके पास एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में सर छोटे छोटे खूबसूरत हंस बहुत सारे थे वो 6 महीने पे एक पंख गिराते थे और राजा को पंख दे देते थे बीच में एक सोने का तथाकथित सोने का के पंख वाला एक बहुत बड़ा पक्षी आया उसने कहा मैं इस सरोवर में रहूंगा छोटे पक्षियों ने कहा कि महाराज जी तो हम सरकार को राजा को देते हैं अपना पंख 6 महीने पे आपके लिए यहां गुंजाइश नहीं है वो सोने के तथाकथित पंख वाला पक्षी वो पहुंच गया राजा के पास उसके सिपाही सलारों को कहा कि देखो ये तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं और कब्जा करके बैठे हुए हैं सरोवर पे राजा ने अपने सिपाही भिजवा दिए सारे हंस मार दिए सर और वो जो सोने के तथाकथित पक्षी बड़ा विशाल पक्षी था सर वो भी उड़ गया मैं इसका संदर्भ छोड़ता हूं अपनी सरकार पर सत्ता प्रतिष्ठान पर अभी जमेगा इंतजार करिए अभी जमेगा हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि दूध में जोड़न ढंग से पड़े तो दही बढ़िया जमता भी जोड़न डाला नहीं है माननीय सभापति महोदय मैं अपने इस कथन को चंद खंडों में रखूंगा पहला खंड होगा